Namaskar. We would like to welcome you all on AYUSH SAMRIDDHI 1033rd webinar. I am really thankful to all NCISM committee experts who have given us blessings with their active participation as a speaker for BAMS second Prof new curriculum and syllabus. Thank you very much for joining us again. And today we would like to welcome Dr. Raman Belgeji, Adani Vishnu Prasad Sharma ji, Madam Parul Joshi ji, Agnihotri ji, Vandana ji. So everybody is expert here on the dais and off the dais, but we are eager to listen. Today, we want to complete Rasashastra and Bhasaji Kalpana syllabus, if it is possible, that our speaker will guide us. And I would like to welcome Professor Vishnu Prasad Sharma ji, ex-principal, Government Ayurvedic College, Guwahati, for his welcome blessings. Namaskar. Good evening to everybody. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on BAMS second professional new syllabus orientation, Rasashastra evam Vaishojya Kalpana. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Dr. Raman S. Belgeji, Professor, HOD, PG and PhD Guide, Department of Rasashastra and Vaishojya Kalpana, Sri Ayurveda Mahavidyalaya, Nagpur. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Dr. Vinamra Sharma, Associate Professor, Rasashastra and Vaishojya Kalpana, Guru Gorakhnath Institute of Medical Sciences, Mahajogi Gorakhnath University, Gorakhpur. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Dr. Raghuvir, Professor and HOD, Department of Rasashastra and Vaishojya Kalpana, Ashwini Ayurveda Medical College and PG Center, Devangiri. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Bodh Mrs. Jogini S. Patil, Associate Professor, Rasashastra Department, Tilak Ayurveda Mahavidyalaya, Consultant Wellness OPD from Pune. Namaskar, madam, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome our Dr. Himanshu Barua from Shillong. Welcome to this evening webinar. Next, I want to welcome as a panelist Professor Chandrabhushan Jha from Varanasi. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Professor Lakshmikant Dwivedi from Jaipur. Namaskar, sir. Dr. K. Shankar Rao from Jabalpur. Namaskar, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Honorable Professor P.K. Prajapati, Honorable Vice Chancellor, Dr. S.R. Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Dr. Govind S. Shukla, Principal Ayurveda College from Jodhpur. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Dr. Satyanarayan B., Principal, Medical Superintendent and Director, Research and Development, Munial Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar.
Next, I want to welcome Dr. Jogini R. Kulkarni, Chairman, Syllabus Expert Committee, Drabbaguna, Professor, PDEA College of Ayurveda and Research Center, Pune. Namaskar, Madam, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Dr. Pramod Baragi, Professor, Department of Rasashastra and BK from Vijayapur. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome. Namaskar, namaskar. Next, I want to welcome Dr. Navakumar Hazarika from Guwahati. Welcome, Nava, to this evening webinar. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar, BMS Second Prof New Syllabus Orientation, Rasashastra Evam Vaishajya Kalpana. Once again, I welcome all of you to this evening webinar. Namaskar, over to Pavanji. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. I would like to communicate my regards to respected Lakshmikant Dwivedi ji, Professor V.K. Agnihotri, sir, welcome, and other senior experts joined us on this platform today. So I would like to invite Professor V.K. Agnihotri ji for his brief preamble. Please. Thank you, sir. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. And I welcome all the dignities. चंदोला जी साथ में है क्या? नहीं, चंदोला जी नहीं है, हमारे रिलेशन में आए हुए हैं, हमारे बेटे के फादर इन लॉ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। ये भी फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं। अभी डॉक्टर कटियार का कल गेस्ट स्पीच है ना यहाँ पर स्कूल में CME में, तो बस उनसे बात हुई थी, इसलिए हम लेट ज्वाइन कर पाए। तो हम वेलकम करते हैं आज के सभी गेस्ट स्पीकर्स को और सारे डिग्निटीज को जिन्होंने अभी तक हमारे आज की वेबिनार के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया है। और जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3 दिनों से वी आर ऑल स्ट्रगलिंग एंड डूइंग अ मैराथन एफर्ट्स टू मेक मोर एंड मोर feasible the new syllabus of BMS second prof for the subject Rashas and Rashal Kalpana, which has been projected by National Commission of Institute of Medicine and NCISM. So the great dignitaries are with us, and we have calculated a lot. Yesterday we have got a very good address by Dr. Yagni Patel ma'am from Pune. Yogini ma'am from Pune. So she covered all the practical aspect to be performed by the students during this subject prof. So today we are again having the semester-wise presentations of our related teachers, and our panelists will also give some ashirwad, some guidelines for its proper execution. With these words, I welcome all the dignities of today's webinar platform, and also eager to listen their views. Thank you so much, and over to Professor Pawan Sharma. Namaskar. Thank you very much, sir. Now I would like to request Vaidya Raman Velge ji. वेलगे जी नमस्कार। रमन जी स्वागत है, आपका स्वागत है। आपने पहले दिन बहुत ही शानदार ढंग से बहुत ही कुछ क्लियर किया था, वैसी ही ऊर्जा से आज भी हम आपका मंच को आशीर्वाद चाहते हैं। वेलकम सर। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने पेपर 1 से रिलेटेड जो है प्रेजेंटेशन किया था। मेरी इच्छा है कि पेपर 2 से रिलेटेड प्रैक्टिकल का मैडम ने ऑलरेडी शेयर कवर्ड, so I would highly appreciate if some other members from the committee, so if they could start with say paper 2, so then we can have discussion, because today we have to discuss a lot of points, and instead of going point by point, if we go with the topics like from the syllabus, so I would highly appreciate if some other members they can be with the paper 2, because I am not ready with paper 2 PPT. So can you ask someone else? President, I hope no committee will be there. They will join later on, I hope. No. You are our guide. You are the excellent guide, sir. No, sir. We all are Russia 7. So I know. Even right from day one, I'm asking if someone else can be with us. They don't because have the some other preparation members... for that, I hope. Sorry, sir?
They Sir, don't in have the preparation. paper one only we have discussed 6 points, sir. Which one, sir? Paper one also. In paper one, Let me share. we have discussed only up to 5 points, sir. We have discussed from 6, 7 and all that. Still remaining, sir. Is my screen visible to you? Hello? Sir, visible, sir, visible. Okay. And it's changing? So can you see the screen change? Sir, it's not changing, sir. It is stagnant. The same problem is there. Screen sharing is paused. Just a minute. I think the slides are there with Pawan, sir. I think they can share it. क्योंकि पिछले बार भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ना सर, आपने शायद भेजा पवन सर के पास. हाँ सर के पास दिया है मैंने. Pawan sir. So Pawan sir, can you please share from your end? I will stop share. Hello. I think Pawan sir. Pawan sir. Okay, sir. Slide number, please. Slide number, please. Hello. मिल गए सर. स्लाइड नंबर दीजिए पवन सर को. पवन सर has opened the PowerPoint. हाँ सर. I think that day we were ready up to 0.5. Completed, sir. We have to start 6th point of the first paper. Kalpana Nirmana, primary and secondary dosage form. This is 6, slide number 49. Just a minute, sir. I will be moving to it. Yes, sir. This one. Yes, sir. So this is regarding Kalpana Nirman. Term first. So should we start with this slide? Sure. Okay. Please. So let us be fast. This is Kalpana Nirman. We have covered all those points from the basic Panchavid Kashai Kalpana, Swarat Kalka Kwadhim Fund, and all those Upakalpana. The next will be our learning plan. The next slide. So as we can see, this is explain Kashai Kalpana. All those 5 points, these are with must know category. So the first one, explain Kashai Kalpana, as usual, we would be having that enlist the dosage form that come under the Panchavid Kashai Kalpana, Upakalpana, then justify primary, secondary, and tertiary dosage form. So all these forms, they are with must know category. And as we can see, this would be our lecture basis. So according to our need, this would be with our theory, this would be with our practical viva, and all those remaining points, let us focus on last point, enlist details of the applications or administration, means Samanya Matra, Anupan or Sahapan, indications and contraindications of the dosage form. So here we have clearly mentioned the indications and contraindications. Similarly, if we focus on the third point, that is describe methods of preparation of the dosage form along with the principles of extraction, concentration, and dilution. So this is somewhat we can correlate it with our pharmaceutical, means modern pharmacy, and thus we have formulated these points. These all are from must know category, and some of these are with lecture, or as we can see, the
lecture and PowerPoint, lecture and discussion. Even we can ask our students to go with that brainstorming session. So, sir, next point. Next slide, sir. And again, here we can find the must know 2 points are there with lecture, PowerPoint, and then last one will be the discussion. So next, let us focus on the activity part. The next slide. So here we can see after completing this activity, students should be able to. And then what will be our methodology after studying this Panchayat Kashay Kalpana? So every student will document different activities performed at home and in societies or communities related to the preparation of different dosage forms, which come under Panchayat Kashay Kalpana, Upakalpana, and their household applications. So here we have cited few examples like fruit juices belong to which Kalpana. Then we can that sauce. So it belongs to which Kalpana. So I write let me right from the first session, I asked my students. So the first drink you consume, that is say tea, chai. So if you take that tea, then tea falls under which category? Is it Aswaras, Kalka, Kwat, Him, or Fand? So many students they would say, sir, it's a Kwat. So now for Kwat, it has to be reduced to half. So if it is not reduced to half, then we say it's a Fand. So then students will say, sir, then Fand has to be not like regular method of tea preparation. So then we ask them that dip tea means what we call it as green tea. So with tea bags, then that is an ideal way of Fand. So tea prepared with that tea bags that falls under the category of Fand. Similarly, if you say that tomato sauce, if you say that all those other preparations, so all those preparations we ask them to compile and then to categorize in different that primary or secondary or tertiary Kashay Kalpana. So next slide. Pawan sir, next slide. This is Kalpana Nirman. Lot of points are there here. So many points are there like Avleha, Sneha Kalpana. The next slide will include Sandhana Kalpana, Pathya Kalpana. So next slide, Sandhan and Pathya Kalpana. So here we can find the 7 point. It covers lot of most important topics. Most important in the sense not just for the from the examination point of view, but even from the practitioner point of view, we can find all those Sneha, Avleha, and Sandhan Kalpana, then Pathya Kalpana. So now our what will be our learning plan? So next slide, sir. Here we can find 3, 4, all those must know categories are there. And so let us focus on the last point. So sorry, first point, explain the basic principles involved, processing techniques, quality control parameters used or involved in the preparation of Avleha Kalpana with examples, then instruments used in small scale as well as large scale production and research updates. So this is of course I like this point very much, means not just Avleha, not just Sandhan, but now while performing our practicals. So I asked them, our second year students, to perform, say, if I ask them with Avleha. So they would be ready with Avleha, say, let us be it Vasa Avleha. So I asked them to perform Vasa Avleha, we explain them, we perform, and then while performing, we discuss with all those Siddhi Lakshana. So these quality control parameters, Siddhi Lakshana, of course, we have those Siddhi Lakshana in process and applicable to the finished product. So what happens? Each and every time we find all those Siddhi Lakshana, they differ with the stages. So एक तार की चाशनी हो, 2 तार की हो, 3 तार की हो, जो भी हो. So we ask them to observe and to note all those Siddhi Lakshana used in small scale and large scale production. So I always ask them, we are having limited resources, we are having limited instruments. So we are say processing oil or Avleha.
say to oil, if it is oil, it would be to the tune of 250 ml. So what if you wish to go with a batch size of 10 liters, 50 liters, 100 liters, 200 liters? Sir, I had worked with pharmacy in my initial days and in consulting to so many pharmacies. So I'm habitual to a batch size of say 200, 500 or 1000 liters. So I asked them, can you imagine how a batch size of say 100 liters? So if we are preparing a quart for oil, and I just asked them, how would you prepare a batch of say 100 liters? So for 100 liters, our kadha, our kvadha dravya, how it can be filtered. So all these points can be discussed with our students to develop their interest in our divine science, Rashastra. So likewise, we can discuss with the instruments, with the all those techniques. Then if we focus on the next point, that is with Sneha Kalpana, then with Sandhana Kalpana, then with Pathya Kalpana. So all these are must-know topics we would be discussing with the lecture, with PowerPoint, and then video clips. So third point, it indicates, we say indicates video clips. So many times our students, they have not visited a pharmacy by the time we teach them. So we can show them all those video clips, and then they will ask, sir, you have shown us all those means Mrut Patra for Sandhana Kalpana, and then Dhanya Rashi, then Bhugarbha Sthapana. But we now find that all those asavarishtas are being prepared in those plastic tanks. And those tanks are say now with a capacity of 5,000 or 10,000 liters. So then what is to be done? According to the Shastra, it should be with Mrutpatra, and then we are finding all those video clips with plastic. So let us discuss the pros and cons of those Dhatu Patra, or say all those Mrutpatra. So next slide, please. Here, then what will be our activity? So here we would ask them, we would divide them into 4 different groups. First group will be directed to collect information on different varieties of proprietary, Vedic and contemporary solid dosage forms. So like tablets, capsules, lozenges. Second group will be dosage forms like oil, syrups, suspensions. Third group will be with the semi-solid dosage forms like ointments, gels, jellies. Fourth group will be directed to collect research articles. So I had already shared, while performing our practical, if I ask a student, means in a batch of say 25, 30 or 45 students, 40 students, we ask them we asked 2 or 3 of them to perform a practical on that day. So if it is Kajali, so I will invite them. Okay, then who would be performing Kajali today? So 2 or 3 students, of course, they are reluctant, and then when they find interest, they are ready with the preparation. So I award them, award in the other sense, in the other way, I award them the published research articles on the topic performed on that practical. So if it is Kajali, I will hand over the printed article to just to discuss. And this is, of course, since last few years, I'm practicing this with my UG students. So one fine day, they would ask us, sir, then how to publish these research articles, and then it is what is XRD, then what is SEM, and then they go and they find they actually in the true sense they search all those articles, and then they we discuss this topic with the research articles in the next practice. So this is how we ask them, and then we discuss all those points. So next slide. Sir, 1 minute, I want to interfere, please. Sorry for interruption. Yes, sir. Sir, in the content 7th chapter, we study regarding Kalpana Nirmana, second part, regarding Avaleva, Sneha, Sandhana, and Pathya, sir. Okay, sir. In the learning objective, we discuss regarding all these 4 formulations, which are major formulations of Vaisheshika Kalpana.
But in the activity, in group 1, we study about tablet, capsule, lotions, group 2, oil, syrup, suspension, and group 3, jellies, ointments, and all those, sir. So I think slight bit difference from the previous lesson plan and the content, sir. So yeah, I think you share this idea regarding upload, sir. Just interpretation. Sir. Again, of course, I'm not right person to comment, but what is there for group 1? Can it be? No, just a no, minute, sir. My clarification is we talk of these 4 formulations, Avleha, Sneha, Sandhana, and Patya in lesson plan and content. So But in the activity will be with respect to we are telling the these student to categories. perform about tablets, oils. So इसमें ही वही 4 formulation दे दिया होता तो एक का एक relation होता था ना सर. In activity, that is what I meant to say. So in bracket, instead of tablets, it could be Avleha. Yeah, sir. Yeah, sir. It could Please be Sandhan. note that, sir, and further we will have some discussion. Yes, sir. Okay, sir. Next slide, sir. So this is point 8. Now we are introducing. This is from second term. All those must to know drugs. So let us be fast with these must to know drugs, right from Parat to Shankh. Then next will be slide number 58. So here with must know drugs, we are with all those must know questions. Right from enlist synonyms of Rasadravya and explain significance of diet. Or all these will be discussed with reference to lecture, PowerPoint, then discussion. So inquiry-based learning, the last one, IBL, is inquiry-based learning. So explain Shodhan and Maran and other processing techniques of the Rasadravya. So what happens, sir, while discussing, we find within those 60 or 50 minutes, we have to explain them, say 1 or 2 techniques, but our textbooks or our ancient books, our granthas, they are with say 10 or more than 10 different techniques, processing techniques. So we will ask them, you just read, you just go through these books, and then depending on their inquiry, we would be discussing in our next lectures. So those lectures could be of during our regular lectures or even during our non-lecture activity. So next. So these are again must know topics. Let us focus on the last one, develop checklist for identification of genuine Rasadravya. So while preparing all those points, do we really know that whatever Rasadravya we have, are they genuine or not? So I still remember when I shifted from my native place, to the other place for the service purpose, I found that Anantamul was sold as Pushkarmul. And the simple answer from that, that what we call Pansari. So if you wish to purchase it or just leave. This is because that shop, that owner, he was sure that whatever he is selling, if it is Anantmul, he may label it as Pushkarmul, and everybody was purchasing. So he clearly told me that not a single Vaidya has ever objected to this Pushkarmul. So we want to sensitize them with the knowledge, with the identification of our genuine Rasadravya, and this will of course be with our inquiry-based learning. So now this is with our third term, sir, formative and summative part, and will be with our third term. Next, sir. Sir, next. So this will be the activity with our must-know category. Students will be divided into 4 or 5 groups, depending on our batch size, right from 60, 75, 100, or 125. And they would be given 5 Rasadravyas from this category, must-know category. And they will be instructed to collect raw samples, pictures, photos of assigned Rasadravya. And then students have to interpret classical as well as mineralogical criteria for identifying those Rasadravyas.
and then they would be encouraged to develop the skill of identification. So this identification would be from the ancient aspect, so dhara, phalak, kon, or from the modern aspect, say it could be luster, it could be all those testing parameters. And according to them, according to these parameters, the students will develop the skill, and then they will be ready to identify the particular drug. So each group will share the presentation, and then teacher will sum up with the concluding remarks. So next slide. Sorry, Rasa Dravya Parichaya, these are desirable to know drugs, right from Susset to Dugdha Pashan. Next, sir. Here we can find all are desirable to know, except that MK explain Shodhana, Maran, and other processing techniques with probable chemical reactions. So here, sorry, here we would be explaining them the probable chemical reaction. Then through, of course, lecture, PowerPoint, then discussion, then discussion. So this will be our formative and summative part. The most important thing, everywhere you can find explain classical and mineralogical identification, explain research updates of Kasis, Gauripash, and Akik. So even though it comes from the desirable to know category, we are sensitizing them with special reference to the chemical reactions performed or taking place during our Shodhan and all those processes. So next. This is from desired category, and here what we had seen with her must know category. Here again, the students will be instructed to refer and collect photos, general information, and medicinal uses from the classical as well as e-resources. So we would ask them to collect all those e-resources because many a lot of videos are there, and some of us. I know one of our teachers from South has shared very nice e-resources, very nice videos, and we are very thankful to him for sharing all those resource material. So students will collect, and they would be sharing, and they would be discussing the topics with the teachers. The next. These are the nice to know drugs. Right from Vaikranta to Kaushashma. Just a minute, sir. So right from Vaikranta to Kaushashma, we can. So right from Vaikranta, Chappala, Anjana. So these are nice to know drugs. And we have categorized them according to their importance. Sir, someone has stated that slides are not visible. Pawan, sir? You are sharing the slides? Slide is visible. The slide is visible. Okay, right. So, sir, next slide. The next slide. So here we can find that none of these are from must know category. These are either nice to know or desirable to know. So Yogini yesterday she very nicely explained that what we have shared, what we have discussed. So if the discussion is regarding the importance, and according to the importance, we have categorized them, and then they will be either with LAQ on if it is with must know, or with SAQ if it is with desirable to know. So what methodology? Again, here the same methodology will be there. We would be asking them to divide and to collect all those photos, all those information available either through the textbooks or through the e-resources. So
We know even if we ask our students, they will go with a Google, they will Google the information and then they will come up with all those either models, preparation of models or all those materials. So instead, if they Google, then why can't we ask them to collect all those e-resources from some reliable source? So this is how we would be performing and discussing the topics. Next, sir. This is again Kalpana Nirman with method of preparation of different dosage forms. Right from Sharkara, Gudapak, Lavana Kalpana. Then next. So you can find all the general method of preparation, importance of temperature. So if it is with Pak, it will be with reference to the temperature. If it is with Kshara, it will be with reference to the precautions, then confirmatory test, then how packing is done. So here we have given special emphasis on the shelf life with example of certain, say if it is Kshar, it will be Kadali Kshar or Chincha Kshar. If it is Ayaskruti, then it will be the general method of Ayaskruti Nirman. And if it is with LAP, here we have now given examples of two LAP. So next, then what will be our lesson plan? Here again, you can find these are the two are with must know category. So according to the importance, describe Kshara Kalpana, say describe Ayaskruti Kalpana, and according to its importance, we would be describing and we would be asking them. So we know third, fourth. So fourth point, this is Kshara Kalpana. So last column. So can you focus on the last column? This is V-SHL. So V stands for vertical integration with Shalya department. So why Shalya? Because it is with reference to Kshar or Kshara Sutra Nirman. The last one, Lepa Kalpana, that is with reference to vertical integration with Kaya Chikitsa and with Panchkarma. So according to the integration, according to the need of integration, we have categorized, we have integrated them with Seshalya, with Panchakarma, with Kaya Chikitsa, and in those Paribhasha Prakaran, we had seen the integration with say Dravyagun department. So integration is an important part and that we have properly focused here. So next slide. Next slide, please. So now this is our Chaturvith Rasayan, right from Kharaliya, Parpati, Kupi Pakwan, Potali. So with few examples, we have discussed all these Chaturvith Rasayan with keeping in mind that these would be for our UG students. So next. Here we can find must know two topics are there. First one, describe importance and unique features of Chaturvith Rasayan, Kharaliya, Parpati, Potali, Kupi Pakwan. So here our lecture means teaching learning method will be lecture with PowerPoint, with inquiry based learning. Then next will be with discussion with we can find first, second, third, fourth, and fifth. So fifth topic, that is describe chemical changes occurring during the preparation of Chaturvith Rasayan. So now we know all our students are techno savvy, so we would be asking them what chemical changes can you find. So they can search, we can guide them properly, and then the brainstorming session or self-directed learning will be our method of choice, means teaching learning method. So as per our requirement, we have chosen the brainstorming, we have chosen the self-direct learning or the inquiry-based learning or the PowerPoint, and this will definitely help our students find interest and they will be very happy. Of course, we would be happy to share our knowledge with them. So yesterday, Yogin ma'am was discussing about this explain law of definite proportion and proportion of mercury and sulfur. So while describing that mercury and sulfur, that's while describing the preparation of Kajali, so she had very nicely explained this the law of definite proportion. So we would be discussing this law with our students. The next. The next slide. So what will be our activity? So group, we can form 3, 4, 5 groups. First group. So this is the direct collecting information on Swarna Bhasma manufacturing company. So
here they would be compiling information regarding Swarna Bhasma manufacturing company group 1. Then group 2 will be Swarna Bhasma as one ingredient in their manufacturing, in their compound formulation. Group 3 will be with Kupipakwa Rasayanas containing Swarna Bhasma. Next, sir. Group 4. Next. So all the students, they would be collecting information with regarding various ingredients. So it could be bhasma, it could be kupipakwa, it could be kharaliya, it could be parpati. And discussion will be all groups have to present their assignment, and finally in charge teacher has to give conclusion of importance of Swarnakalpa, then rationality behind following different references and probable variation in their concept. So I would definitely like to focus on the last point, probable variation in their cost. What happens? Our students, they find one company selling Swarna Bhasma, say if it is 1 gram, it is say about 16,000 per gram. The other company with 13,000 and someone will offer it as 8,000 per gram. So why this variation is there? So we would be asking him, this is directly linked with the concept of Lohana Maranam Sheshtam Sarvesham Rasa Bhasmanam. So if it is processed with Parad, and if Parad is having 1 kg Parad, before say 5 years, it was around 3,000, 4,000, 5,000 per kg. Now it is selling at Nagpur. We are with 15,000, 14 to 15,000 per kg of Parad. So if it is processed with Parad, it will be, of course, we don't gain. The product gain will be with while if the process is done with Gandhak, then it adds to the product weight. But of course, if it is processed with Parad, they don't add, and then comparatively find less product. So then Swarnakalpa, if it is processed with Parad, it will definitely add to its cost. So students, if they go with compiling, with collecting all these formulations right from the shop, they will know more products, they will know more companies, and then they will know the need and the requirement and when to prescribe. So this is very simple to prescribe Swarna Bhasma 1 gram, but how to prescribe, why to prescribe. So my emphasis on why to prescribe. So then they will be sensitized. If it is costing too much, then they will get the information. So this is second last point, current and emerging trend in Ayurvedic pharmaceuticals. So this deals with cosmetics and then the other dosage forms. So next, cosmetics, this is of course a new, this is addition. We know all of us, we deal with the cosmetics. In one of the articles I had read that in a month, so if we are exposed to cosmetics in some or the other way, directly or indirectly, we are exposed to more than 1,000 cosmetics in a month. So even a shaving cream, a lipstick, then any you name it, and all those cosmetics. So each cosmetic deals with not less than 10, 20, 30 chemical ingredients. So then we would ask them to compile. This will be our next activity. Then the dosage forms. So these two, solid, liquid, and semi-solid dosage forms, and need of different dosage forms, we would sensitize them regarding the dosage forms. So next slide. Next slide, sir. So here we can find all are desirable to know, even though we sensitize them, we do discuss with all those lecture, PowerPoint, discussion, brainstorming sessions, self-directed learning, and all those points, of course, they would be with our theory part, with our Viva, and then they will know how the cosmetics are prepared, how the cosmetics are selected. Last point, enlist quality control parameters of cosmetic preparations. So what quality control parameters are chosen? While discussing this topic, we will ask them to go with all these quality control parameters. So this is again need of the hour, and that's why we have added. That's why NCISM has added this into the current syllabus. Next point.
Next slide, sir. So, what will be our objective and how we would be forming this methodology? So, group one, this is the current and emerging trends in Ayurvedic pharmaceuticals, namely cosmetics, nutraceuticals, and herbaceuticals. So we know all these cosmetics, we know nutraceuticals, we know herbaceuticals. So all those terms are there, but we would be asking them to enlist this, then to review and record the commonly used modified dosage forms of Ayurvedic formulations. I will discuss this. Third, generate a folder on computer about relevant research articles on modified Ayurvedic dosage forms. So students, they will first enlist, then they will record the available products, and then they would be having a folder on computer about relevant research articles. So we know research, so that is called, it must be for the benefit of society, and whatever research, if it is translated for the common benefit of common people, then that is highly accepted. Recently, not recently, before 3-4 years, I had visited one pharmacy, and they are preparing some nutraceutical. So that is, they call it as herbal nutraceutical. So you must be knowing that सौंफ आप लोगों ने देखी है. So एक कलरफुल सौंफ आती है मार्केट में, उसके दाने दाने आते हैं कलरफुल सौंफ, and that packet is sold at say ₹5 or ₹10. So all those colored and fragrant, of course, colored and fragrant granules, they were embedded in a straw. So that straw is filled with those colored granules, medicated granules, and then that straw, we ask our kids to drink milk through the straw. So that straw makes the milk fragrant, that straw makes the milk medicated. So that is the claim by that particular company. So what I meant to say, that medicated straw is one of a novel dosage forms. So whether that is available in our market, so definitely not, because the straw itself costs $1. So $1 currently it is around 83-85 rupees per straw. So milk will be costing ₹10 or 20, and straw only will be costing ₹80. So this type of research is not practically applicable here. But of course, this is a new dosage form. We can ask them. Previously, we know those say before 10 or 20 years, we had that belladonna patti, means that is available even with the name of belladonna patti. So now while we used to apply it or some abscess, so apakva vidradhi. So after application, we can find its immediate results. So this is a this is a dermal patch. So even of course, this is my PG, for my PG scholars. I had asked them to prepare some transdermal drug delivery. So we are currently working on it with one pharmacy. Of course, this is not for UG. So can we ask them to collect such information on current and emerging trends? So they are very happy with her Vati, with her Guti, with her Sandhan Kalpana. But what if market is selling Maharasnadi Kwath, market is selling all those Kwath in Sandhan form with a shelf life of 10 years? So they simply ask us, sir, Kwath shelf life is Saviritavadhi is say 24 hours. Then how can a product be made available in market that lasts for 3 years, 5 years, or 10 years? So then we would be discussing how these paths are prepared and how these paths are converted into Sandhan form. Through Sandhan form, they attain the shelf life of say more than 3, 5, or 10 years. So next slide. Next slide, please. So this is last topic, GMP. I think this was discussed previously. We had this point even in our previous syllabus, Drugs and Cosmetics Act. So I still remember I had those notes of 3 or 4 pages.
And this act itself, that book contains more than 800 pages with all those alphabetical ABCD schedules. So what is new here? We know that Food Safety and Standards Authority of India, that's FSSAI. So this food safety standards, FSSAI, they have included all those Avla into food, then Triphala into food, then Kumari into food. So now they are with more than 350. I had recently gone through one article where 350 Ayurvedic herbs were categorized, or I don't know whether they were categorized or they were supposed to get categorized into FSSAI standards. So we all know that food standards are different than those drug standards. So this we would be sensitizing our students through such topics. So next slide. So here we know on the must-know category, here the explain the legal and regulatory aspects of manufacturing and sale of Ayurvedic drugs. So previously this had been in our syllabus. We know Drugs and Cosmetics Act very well, then describe acts and rules mentioned in DNC and Rule 1945 and their relevance to Ayurvedic Siddha Unani drugs. So since being PG guide, PhD guide, we are guiding our students, and some of our students, they are with the licensing process. So not necessarily that PG students are only entitled to get license. We are religious students are there, and all our students, if they are exposed to such drugs and cosmetics act, to those FSSAI standards, they will definitely find interest, and of course they could be our entrepreneurs too. So this will be our must-know category, then nice to know, and will be discussed through our PPT, through our inquiry-based learning, through brainstorming session. So brainstorming will be our very nice way of discussing those acts, discussing all those parameters applicable to our drugs. So next slide, sir. So these are GMP, and what will be our methodology is group need to report to misleading advertisements under Drugs and Magic Remedies Act. The students they will be asked to submit details of objectionable advertisements in the prescribed format. So we know all those spurious, misbranded, and all those terms, and all those misleading advertisements. So we know if we want to have license, we are not supposed to claim cashier. So we are not supposed to claim for weight loss. So all these we are not supposed to, but even in newspapers, in all those TV channels, we can find such misleading advertisements. So we will ask them, and in students, they will form a group, they will be categorized into various groups, and then one group we can ask them to collect such information of misleading advertisements through say print media, the other will be through TV channels, then the third will be through social media, and accordingly they will prepare the reports, and we will discuss with on those points. So next, I think this was regarding last point. So next. So sir, this was regarding paper 1, and I had already told you that I had prepared slides with reference to paper 1. So these are this is that was all from my side. If somebody can add, I'm ready to be with it discussion. So sir, thank you all. So all these next slides, this is regarding our teaching learning methods in our curriculum. Then the next slide will discuss all those assessment patterns, and you can just scroll down all those points. This is all we had in our syllabus. That clinical assessment that we had already discussed, Yogini ma'am, she has very nicely described all those practical points and how we can prepare all those mark sheets. You can find this internal assessment has become an integral part of our mark sheet. Previously, it was not in our practical mark sheet. Next, sir. You just scroll one by one. All those slides, around 100 slides are there. So this is our duration we had discussed.
Next, sir. This is how we convert all our mean. That is, previously we had a mean of around 40 marks in our university, and in converting 40 marks with reference to the mark sheet. So next, these are regarding all those periodical assessment evaluation methods. We had already discussed how we would be evaluating our students. This is previously we had the term unit test. Now we call it as periodical. So periodical assessment followed by term end, periodical assessment, second term end. So 3+1, 3+1, then 3+ university exam. So this is how we would be conducting more than 11, 12 exams in our entire 18 months. Next, sir. This is how we have to formulate our MCQs, 20 MCQ, 1 mark each, 8 SAQ short answer question, 5 marks, and 4 LAQ. Previously, we had 15 marks in our university, but now we have reduced that burden of 15 to 10 marks. Of course, now all questions are compulsory. Previously, we had the option of, I think, out of 6, we have to solve any 5, but now all questions are compulsory. We introduced the system of MCQ from this year. Next one. The next slides. These are all those point wise means what we can call marks wise distribution of all those points. Next. Here we can while framing the question bank, while preparing question bank, we have to focus on these slides, especially right from 80 onwards, or say this must be 87. So here we can find, say if I wish to prepare a question from chronological development of Ayurveda Aushadh Nirman, Ayurveda Kramika Vikas, Rashastra ka Kramik Vikas. So here we know that question will not exceed 5 marks and no MCQ would be there. So this SAQ and LAQ. Accordingly, we can prepare a question bank, and I had already requested. So if 1 point is taken by one college, then within a month we will be having question bank of more than 1,000 questions. So let us be with this teamwork. Next, sir. These are how to prepare MCQ depending from those particular topics, say from Paribhasha to Yantra to Kalpana Nirman. So this already we can find it in our syllabus. So next 3, 4, 5 slides, you can be fast, more fast. These are the reference books. So around 43 books are there, and I have added the term. So previous one. Next. So after 43 books, I have added list will be revised shortly. So in our university, we have revised the list to around 63, 64 books. So as per our need, we can add many more books. So according to a university, if you have the system of approval, so in our university, we have to get the books approved. So all those approved books they become an integral part of our list of books. So these are short forms. Of course, I do not remember all the short forms. I'm still trying to learn on those short forms. So next will be, these are domains. Then next will be, next slide, sir. These are all those teaching learning methods. Reddy sir, then Yogini Patil ma'am, they have very nicely discussed. And of course, they are the masters. And this is my last slide. Change is inevitable in life. You can either resist it and potentially get run over by it, or you can choose to cooperate with it, adapt to it, and learn how to benefit from it. When you embrace change, you will begin to see it as an opportunity for growth. So I have always seen any change. I always see it as a challenge, and I go for not because I am a member of this syllabus committee, but even if somebody asks me, okay, are you ready for this syllabus? Okay, no problem. Are you ready for this challenge? Yes, no, no problem. So of course, again, this Parivartan Samsar ka niyam hai. So let us be with the Parivartan, and definitely you will enjoy the syllabus. So thank you, sir. Thank you from my side.
Over to Pawan sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके अलावा अभी विनम्र जी भी हैं हमारे साथ, जी सर। योगिनी मैडम भी ज्वाइन हुई है। हाँ सर। वेलकम योगिनी मैडम। So they will be of great help to me. I think Vinamra sir, he is running fever. So fever, cold, and since last few days. So Vinamra sir, are you there? Hello, sir. Namaste. Sir, how are you, sir? Suffering with I'm not Yes, well. Sir, have you taken Yes, tension of sir. the syllabus? But sorry, sir. Sir, आपने syllabus का tension तो नहीं लिया है ना? नहीं sir. नहीं sir, ऐसा कुछ नहीं है sir. नहीं, sir. And you have covered all these things, sir. You have covered Yes, sir. everything. I think very I know, nice sir. and very simple. In the I know, simple sir. language, you have covered all things. No, sir. And this is- yesterday, Dr. Yogini Patil ma'am has covered many yes, things. yes, sir. One has to read the syllabus now, I think. Whosoever the teacher of Rashtrasan message Kapna, they have to read the syllabus, sir, properly. Yes. And try to implement. If any problem, they can ask us, so we can help them. Right. अभी सिलेबस में और कुछ बचा है क्यूरिकुलम में? Vinamra sir, please. सर सभी कुछ डिस्कस हो गया है सर। पेपर 1 सर ने पूरा कवर किया है, प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर किया है। अब पेपर 2 सर है, उसमें भी 12 पॉइंट्स हैं उसमें भी। जैसे उसमें औषधि प्रयोग विज्ञान है, कि सेकंड पेपर का जो हमारा टाइटल है वो है आयुर्वेदी औषधि प्रयोग विज्ञान। तो उसमें देयर आर 12 पॉइंट्स। उसमें औषधि प्रयोग विज्ञान है, उसमें सिंगल ड्रग मैं शेयर करूं क्या विनम्र जी? शेयर करूं? शुड आई शेयर पीपीटी? पीपीटी में सर है क्या रमन सर? नहीं सर, मेरे इसमें नहीं है। दैट इज पेपर 2। आई एम रेडी विद पेपर 1। सिलेबस अगर होगा तो सर उसमें होगा, शायद इसमें नहीं होगा। But sir, all those points, the same pattern, same teaching हाँ, learning same method, pattern same पे or ही है। similar teaching learning methods can be adopted, and of course, हाँ। second paper they will definitely enjoy. हाँ, All the उसमें कुछ students- सर क्या है, हम लोगों ने रसशास्त्र और मैसेज का नॉमेनक्लेचर था वो चेंज हुआ है सर। और सेकंड पेपर जो है आयुर्वेद औषधि प्रयोग विज्ञान है, इसमें जो स्पेशली जो ऐड किया गया है वो बहुकल्पम। जो बहुकल्पम का जो है ना उद्देश्य है, औषधि की जो क्वालिटी है बहुकल्पम, तो उसमें जो सेकंड पॉइंट है सीरियल नंबर में, तो सिंगल ड्रग बहुत सारी कल्पना। जैसे गुड़ची का एग्जाम्पल है, तो गुड़ची का स्वरस भी यूज करते हैं, गुड़ची का गुड़ची आदि चूर्ण भी है, गुड़ची क्वाथ है, गुड़ची हिम है, गुड़ची घन है, गुड़ची सत्व है, अमृतादि गुग्गुल है, अमृतारिष्टम है। तो ये जो है गुड़ची के कुछ एग्जाम्पल है कि एक सिंगल ड्रग को कितनी डिफरेंट कल्पना के साथ यूज कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि सबके आगे रेफरेंस मेंशन है, तो किसी भी टीचर को जब भी वो क्लास के लिए जा रहे हैं तो वो जो उसमें मेंशन रेफरेंस है उसको आधार बनाते हुए they can explain the detail regarding the therapeutic property, what will be the probable pharmacodynamic and kinetic action of the drug, what will be matra, what will be the anupan, sevan kal. So these or any research update, as yesterday some asked the questions about the research updates. So if if the teachers got any reference in related to the any drug, for example गुड़ची क्वाथ पे कोई अगर रिसर्च हुई है, गुड़ची आदि चूर्ण पे कोई रिसर्च है, they can use as a research literature during the class or lecture. Likewise, so everything is mentioned, like गुड़ची के साथ साथ आम्लकी का भी एग्जांपल है, आम्लकी स्वरस है, आम्लकी चूर्ण है, आम्लकी आदि चूर्ण है, तिफला रसायन है, च्यवनप्राश, धात्री लो, आम्लकी गुटका। लाइकवाइज भल्ला तक है, भल्ला तक मोदक, भल्ला तक लेप है, भल्ला तक क्वाथ है, सर इस तरह से दिया हुआ है। गंधक का भी बारे में है, गंधक चूर्ण है, गंधक रसायन, गंधक दति, गंधक तेल, गंधकादि मलहर, गंधकादि लेप, गंधकादि बटी, गैरिक का एग्जाम्पल है। तो ये इस तरह से सर उसमें दिया हुआ है। ऐसे ही जो हमारी भस्म है, थर्ड हम सीरियल नंबर पर जाएंगे तो उसमें जो भस्म है, अभ्रक भस्म है, स्वर्णमाक्षिक भस्म है,
स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, तो इन जितने भी भस्म है या जहाँ पे जो महारस उपरस साधारण रस या कोई भी उपधातु शुद्ध रूप में, जैसे शुद्ध गैरिक है, शुद्ध गंधक है, शुद्ध शिलाजीत है, यूज होती है प्रैक्टिस में, तो उनके बारे में भी टीचर जो है बता सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा हेडिंग्स उसमें मेंशन किए गए हैं, स्पेसिफाई किए हैं, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, अगर वो हार्मोमिनल ड्रग है तो फाइटोकेमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका फार्माकोडायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक क्या हो सकता है, उसके उसके गुण के अनुसार क्या हो सकता है, या केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। पथ्यापथ का विचार किया जा सकता है, किसी द्रव्य हम द्रव्य को दे रहे हैं तो उसका पथ्यापत्य कैसे देना है, सेवन काल क्या है, ये काल मर्यादा क्या है, जैसे आरोग्य वर्धनी वटे में कल मैम बता रहे थे और हम लोग जानते हैं मंडल पर्यंत है, तो हम काल मर्यादा किसी ड्रग के बारे में दे रखा है तो उसको बता सकते हैं। और रिसर्च अपडेट्स को क्लब किया गया है so that the student should aware that what are the research is going on different formulations. So उसका सीरियल नंबर 4 जो है सेकंड पेपर का, उसमें औषधि कल्प के बारे में कंपाउंड फॉर्मुलेशंस है। पैटर्न वही है, केमिकल कंपोजिशन, फाइटोकेमिकल कंपोजिशन, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, थेरेप्टिक प्रॉपर्टी, अवस्था अनुसार यूज, मात्रा, अनुपान, पथ्य सेवन काल। इससे आप देखेंगे पहले बच्चा जो फॉर्मुलेशन पढ़ता था तो उसमें ज्यादातर उसकी मात्रा और थेरेपेटिक यूज पे फोकस करता था, उसके बनाने के तरीके पे या उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन या उसकी यूज पे फोकस करता था। लेकिन अभी थोड़ा सा और ब्रॉड है, हम पथ्यापत्य का भी विचार के बारे में बता रहे हैं, साथ साथ अवस्था अनुसार यूज भी बता रहे हैं। मतलब जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इसका जो शॉर्ट नेम है, तो उसका पर्पज ये है कि किसी फार्मेसी को यूज करते हैं उसका जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है while prescribing a rational prescription. So what are the things are required, the main points are required to be remembered. तो वो सारे जो है उसको एक क्लियर पिक्चर मिल जा रही है। तो फोर्थ जो सीरियल नंबर है उसमें वही सब हेडिंग्स हैं जो सीरियल नंबर 2 में है, 3 में है, 4 में है, लेकिन यहाँ पे खरलीय रसायन के साथ कैटेगरी करी गई है, जिसमें आरोग्य वर्धनी गुटका है, कुमार कल्याण रस है, गर्भपाल रस है, चंद्रप्रभावटी है, प्रवाल पंचामृत है, आनंद भैरव रस है। तो इसमें आप अगर योगेंद्र रस है, लक्ष्मी विलास रस है, वसंत कुसुमाकर रस है, वसंत मालती रस है, बृहदवाद चिंतामणि है, ये सभी फार्मुलेशन जो इम्पोर्टेंट फार्मुलेशन है जो कि प्रैक्टिस में यूज होती है, बटी है, श्वास कुठार रस है, सभी कैटेगरी की फार्मुलेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है। इच्छा वेदी रस है, कृमि कुठार रस है, है, कामदूदा रस है, ये सब यूज किया गया है। परपटी कल्पना में पंचामृत की मूल परपटी है। कुपीपको रसायन की हम बात करते हैं तो उसमें स्वर्णभंग आता है, मकर ध्वज है, समीर पन्नग रस है, पोटली रसायन भी इसमें इंक्लूड है, जैसे हेमगर पोटली वगैरह विद रेफरेंस के साथ मेंशन किया गया है। उसमें जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है हमारा आयुर्वेदिक फार्मूला ऑफ इंडिया है, और उसमें जो रेफरेंस मेंशन है में जहां से जिस टेक्स्ट से लिया गया है A5 में जो मेंशन है उसको भी मेंशन किया गया है, सो दैट इट विल इजी टू टीचर आल्सो टू सर्च द रेफरेंस ऑफ कि कहाँ से किस रेफरेंस से लेना है, तो वो एक यूनिफॉर्मिटी भी डेवलप होती है। इसके अलावा कोई टीचर बाध्य नहीं है, वो अपने डिस्कशन को और अच्छे से उसको कर सकते हैं। सीरियल नंबर 5 में सेम चीज है, औषधि कल्पना, कंपाउंड ड्रग ही है, उनके जो पॉइंट्स है वो भी सारे केमिकल कंपोजिशन है, फाइटोकेमिकल कंपोजिशन है, अगर वो हार्मोनियल ड्रग है तो यहाँ पे जो औषधियों की जो नोमेनक्लेचर है, जो कौन कौन सी मेडिसिन इंक्लूड की गई है, वो है दशमूला क्वाथ चूर्ण, महामंजिष्टादि क्वाथ, साथ में उष्यानग चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, बिल्वादी गुटका, चित्रकादी गुटका, सिंगनाथ गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, च्यवनप्राश अवले, दाड़िमा अवले, पंचगव्य घृता, ब्राह्मी घृता, नारायण तेल, नीली भृंगादि तेल, पंचगुना तेल, चित्रकादि गुटका, अशोकारिष्ट, कुमारी आसव, कुटजारिष्ट, गंधकाद्य मलहर, लेप, दीज ऑल आर द फॉर्मुलेशंस। आप देखेंगे सर सारी फॉर्मुलेशन, कोई भी फॉर्मुलेशन जो है आपको मिलेंगी, हर वैरायटी की फॉर्मुलेशन बच्चों को सीखने को मिलेंगी कि उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसमें मेन केमिकल कंपोजिशन क्या है, अगर वो प्योर मेटेलिक और मिनरल ड्रग है,
उसका फाइटोकेमिकल कंपोजिशन क्या है, अगर वो हार्मोनियल फॉर्मुलेशन है उसकी मात्रा क्या हो सकती है, या उसको अवस्था अनुसार कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, क्या पत्ते पत्ते का मान रखना है जब जब को दे रहा है, कितने समय तक दे सकते हैं। तो ये सब चीजें बच्चों को एक ब्रॉड पिक्चर मिलेगी, और उसमें टाइम लिमिट है सबको उसके बारे में, हर उसके और ज्यादातर ये सभी टर्म 3 में है सर। टर्म 1 में जो टॉपिक आ रहे हैं वो सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 तक आ रहा है। फिर उसके बाद सीरियल नंबर 3 जो है वो जैसे वो टर्म 2 का पार्ट है। इसी तरह से सीरियल नंबर 4 जो है वो भी टर्म 2 का पार्ट है। और उसके बाद जो सीरियल नंबर 5 है वो जो है टर्म टर्म सीरियल नंबर 5 से जो है टर्म 3 का पार्ट आ जाता है सर ये इसमें। ऐसे ही जो 6 नंबर सीरियल नंबर है वो डोजेस फॉर्म्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। तो मैम ने कल बताया भी था, योगिनी पाटिल मैम ने कवर किया था कि कॉस्मेटिक की कौन कौन सी जो फॉर्मुलेशंस हैं उसमें प्रैक्टिकल में बच्चे क्या सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं तो उनको वीडियो दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई वर्कशॉप करा सकते हैं या कोई गेस्ट लेक्चर करा सकते हैं, तो वी कैन गिव द सम एक्सपोजर। सो लाइकवाइज इसको थ्योरी में भी कवर करने की कोशिश की गई है पेपर 2 में, जिसमें डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, फिर उसमें रिसर्च अपडेट्स अगर कोई है तो उसको हम कर सकते हैं, कुछ रिलेटेड केस स्टडीज है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। सीरियल नंबर 7 में न्यूट्रास्यूटिकल को ऐड किया गया जिसमें उसका इंट्रोडक्शन है, types है, कुछ इंडियन न्यूट्रास्यूटिकल्स जो यूज होते हैं मार्केट में अगर अवेलेबल है तो उनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। साथ साथ इसमें कुछ जो नया ऐड किया गया है कि एक हेल्थ के जो डिफरेंट डायमेंशंस है, जनरल हेल्थ है, पीडियाट्रिक हेल्थ है, जीरेटिक हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वुमेन्स हेल्थ है, कुछ कार्डियो प्रोटेक्टिव है, स्पोर्ट्स एंडेवर है, मेंटल हेल्थ है। उससे रिलेटेड जितने भी कुछ फार्मुलेशन एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ, जैसे च्यवनप्राश अमले को हम जीरेटिक हेल्थ से जोड़ के यूज कर सकते हैं, जनरल हेल्थ में कुशवांडा अमले यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसी को यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सी मेडिसिन यूज की जा सकती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम फल घृत को यूज करते हैं, इसके अलावा और भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक दो एग्जाम्पल से बच्चों को एक क्रिएटिविटी, मतलब उनको माइंड को एक क्रिएटिविटी डेवलप की जा रही है कि वो इस एंगल पे भी सोच सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या मेडिसिन यूज हो सकती है। उसमें एक एग्जाम्पल ये है, कुछ और भी जो प्रैक्टिस में हो सकती है वो भी जोड़ सकते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग में जैसे हम लोग समझते हैं अर्जुन, हम यूज करते हैं अर्जुन क्षीरपाक, रसोन क्षीरपाक हम लोग बोलते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्रग्स जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, लेकिन बच्चों को एक आइडिया मिलेगा कि कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग की कैटेगरी ऐसी हो सकती है। मेंटल हेल्थ में ब्रह्म रसायन को इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसके अलावा और भी ड्रग है जो उसको यूज किया सकती है। लेकिन एक एक एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। सीरियल नंबर 8 जो है उसमें जो मेन पॉइंट है वो अनुपान प्रयोग है और औषधि कल्पा, क्योंकि अनुपान का चिकित्सा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अनुपान क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसको अनुपान फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सॉरी सर सिलेक्शन ऑफ अनुपान, दोषा, औषधि, रोग रोगी, आहार, पर्पज ऑफ अनुपान, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ अनुपान। तो इस तरह से बताया गया, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। कैशोर गुगुल उसके एग्जाम्पल के साथ सारंगधर सहता मध्यम खंड का रेफरेंस दिया हुआ, योगराज गुगुल, नारायण चूर्ण, रस सिंधु, रस परपटी। जैसे कुछ इसमें एग्जाम्पल थे कि एक ही ड्रग को कई अगर अनुपान भेद से हम डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में यूज कर सकते हैं। कैशोर गुगुल को कैसे कई अलग अनुपान के साथ दे सकते हैं, अलग योगराज गुगुल को कैसे यूज कर सकते हैं, रस सिंदूर को कैसे यूज कर सकते हैं, तो रस तरंगिनी का रेफरेंस है उसमें, रस प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब बच्चों को समझ में आएगा कि एक कल्पा उसको व्याधि के अनुसार जो है अनेक अनुपान के साथ कैसे प्रयोग कर सकते हैं, अनेक डिफरेंट व्याधि में। सीरियल नंबर जो 9 है वो औषधि प्रयोग मार्ग है। हालांकि ये पहले भी सिलेबस में था और लेकिन इसको थोड़ा सा और
अच्छे से डिजाइन किया गया है। इसमें औषधि प्रयोग मार्ग के अनुसार बताया गया है, जैसे ओरल कैविटी, मुख से देने वाली चीजें, जैसे वटी है, गुटखा है, चूर्ण है, आसावरिष्ट है, अवले है, खंड है, कुछ घी है या तेल है जो ओरली हम देते हैं। नासा रूट जो है, नेजल रूट, ओरल कैविटी हो गया, नेजल रूट हो गया। तो कर्ण के थ्रू जैसे कुछ तेल होते हैं, अक्षी रूट, आई ड्रॉप्स है, घी तेल है, या त्वचा स्किन पे जैसे हम लेप लगाते हैं, आलेप करते हैं, लेप, शिरोधारा, तक्रधारा, अभ्यंग, सहचर आदि तेल का एग्जाम्पल दिया गया है। अस्थि भग्न में मूरी विन्न तेल के बारे में है, व्रण में जात्यादि तेल के बारे में है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल देंगे औषधि के डिफरेंट डिफरेंट प्रयोग मार्ग क्या है। देन सीरियल नंबर हम 10 पे जाएंगे तो rational prescription along with the safe dispensing of Ayurvedic formulation। तो इसमें कल मैडम ने बताया भी था कि हम लोगों ने NABH की गाइडलाइन जो रेशनल प्रिस्क्रिप्शन की दी गई है उसको फॉलो किया। इसको हमने प्रैक्टिकल के साथ भी क्लब किया है कि वट एवर द स्टूडेंट विल लर्न इन द थ्योरी, दे कैन आल्सो get the exposure in the practical point of view. We will go for the hospital and then look some the prescription, 5 to 10 prescription देखने हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन को कैसे एक आइडिएशन में के रूप में देख सकते हैं। तो ये हम लोग रसशास्त्र और एक ही इसको अच्छे से समझ सकता है कि कौन सी ड्रग वो जो बना रहा है उसका उसने प्रयोग पढ़ा है, काल मर्यादा पढ़ी है, पथ्यापत्य का विचार पढ़ा है, यूज सकता है। तो उसी चीज में, उसी क्रम में वो रैशनल प्रिस्क्रिप्शन को भी सीख सकता है और उसकी कैसे में बच्चा सीखेगा। धीरे धीरे लर्निंग लेवल भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे एक तरह से ब्लूम टैक्सोनॉमी की तरह उसका पढ़ रहा है। टर्म 1 में कुछ पॉइंट बेसिक सीख रहा है, टर्म 2 में जो है थोड़ा उसको और वाइड एक्सपोजर मिल रहा है, टर्म 3 तक आते आते जो है उसको उसकी एप्लीकेशन के पार्ट पे आ जा रहा है। वो जहां वो अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग कर रहा है, लास्ट में आते आते अप्लाई में आ जाता है कि कैसे जो वट एवर ही लर्न या शी लर्न, स्टूडेंट लर्न इन टर्म 1 एंड हाउ टू अप्लाई इट। सो इस तरह से उनका जो है जो उन्हें सीखा टर्म 1 टर्म 2 में, टर्म 3 तक आते आते वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक एक्सपोजर मिलता है। ट्रेडिशनल एंड लोकल प्रैक्टिस भी एक सीरियल नंबर 11 है। उसमें जो है हम जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी हम थ्रू आउट इंडिया हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कोई टीचिंग लर्निंग नहीं की है लेकिन दे आर वेरी वेल नोन प्रैक्टिशनर्स। तो उसको भी बच्चों को बताया जा रहा है। और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, प्रैक्टिस है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो वो भी बच्चों को बताया जा रहा है। इसी के हमने TKDL को भी ऐड किया गया। TKDL क्या है, TK किस तरह से वर्क करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, और कैसे उसने हमारे जो ट्रेडिशनल राइट्स है उनको प्रिजर्व किया है, IPR के अकॉर्डिंग कैसे किया है, तो वो भी बच्चों को सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोकल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो इसमें फिक्स इसलिए नहीं किया गया है कि क्योंकि ये बहुत जगह, सब जगह, हर एरिया में अपनी अपनी प्रैक्टिस है। तो उनके सराउंडिंग में जो लोकल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे उनको बच्चों को मिलवाया जाए, बातचीत करा जाए, उनके बारे में, मेडिसिन के बारे में बताया जाए। दे कैन गेट, दे हैव टू नो दैट कि वो किसी डिजीज में अगर कोई फेमस है या कोई ट्रीटमेंट दे रहा है या कोई ऑयल बनाता है कोई अच्छा, तो उनके बारे में भी एक जानकारी मिलेगी। इसमें सीरियल नंबर 12 जो है फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस फॉर आयुर्वेद ड्रग। तो फार्माकोविजिलेंस क्या है, ADR क्या है, और ये जो टॉपिक है ये कंबाइंड है द्रव्य के साथ भी। तो द्रव्य सब्जेक्ट में भी जो है फार्माकोविजिलेंस का पार्ट आता है और यहाँ पे भी पार्टिकुलर। तो वी कैन मीन्स हमारे टाइम टेबल में जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो वी कैन कंबाइन दिस टॉपिक विद द द्रव्य फैकल्टी और द्रव्य डिपार्टमेंट। सो जो उनकी टीचिंग आवर्स हैं वो दोनों की कंबाइन हो सकते हैं और वो दोनों लोग एक साथ भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट द्रव्यगुण में भी है, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऐड किया है।
और कुछ तो शेयरिंग बेसिस पे क्लास की जाए। तो इसके बारे में जो पॉलिसीज है या फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है ये सूत्रक का, उसके बारे में समझ सकते हैं। और सेक्टर स्कीम, सेंटर फॉर फार्माकोविजिलेंस है, इसकी मेन सेंटर क्या है, पेरिफेरल सेंटर क्या है, तो स्टूडेंट शुड नो। और कुछ केस स्टडी दिखाई दे सकती है, कोई एडीआर पहले रिपोर्ट हुई है, उनके कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, तो उसको भी यहाँ पे कवर किया जा सकता है। बाकी जो इसका ये टोटल सीरियल नंबर 1 to 12, इसमें जो 2 सीरियल नंबर हैं 1 और 2 वो टर्म 1 में कवर हो रहे हैं, सीरियल नंबर 3 और 4 टर्म 2 में कवर हो रहे हैं, और सीरियल नंबर 3 to 12 जो है टर्म 3 में कवर हो रहे हैं। बाकी जो लर्निंग मेथोलॉजी है, असेसमेंट क्राइटेरिया है, वो सारा जैसे डॉक्टर रमन बिलगे सर ने बताया, वो उसी पैटर्न में ही है। इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कोर्स है, एक एक टॉपिक पे अगर हम जाते हैं तो टर्न पे ही चल रहा है। उसका असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, टीचिंग लर्निंग मेथोलॉजी कौन कौन सी कर सकते हैं, है ना, उसमें प्लस मस्ट टू, तो पैटर्न उसका बारे में। और बाकी कुछ क्वेश्चन होगा किसी का तो यहाँ पे सम बोर्ड को। हेलो डॉक्टर पवन सर। विनम्रजीत जी, सर इज डन फ्रॉम माय साइड सर। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपने सरल शब्दों में, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी वही है, टेक्नोलॉजी भी वही है, तो ब्रीफ में आपने बड़ा अच्छा समझाया। हमारे साथ मैडम योगिनी जी जुड़ी हुई है। आई इनवाइट डॉक्टर योगिनी पाटिल जी फॉर हर रिमार्क्स। मैडम योगिनी जी, am I audible to you? No, Yogini ji is not there. Bargi ji, Yogini ji, would you like to have question answer from audience? Yes, sir. So Yogini madam is there. Yes, yes. Respected Yogini madam. In the meantime, Dr. Bargi, you should communicate your comments. Hello. Yes. Audible, sir? Okay. Thank you, sir. First of all, thankful and congratulate the sir for completing the description regarding the first paper, which they explained and clarified the doubts of the teachers. On the first paper regarding the change today, sir, instead of e-health, joined us and sir also completed the second paper, really a practical oriented and by which the students can take over something after the completion of the course. So, it's very practical oriented and scientific. So the division of the syllabus has been very such a way. First paper talks on the basics of all the topics of RSBK and second practical oriented. But only the few things my juniors and my friends were asking regarding the pharmacokinetics of the formulation, because when we go for the dissertation and we write regarding the pharmacokinetics of the individual formulations, but the pharmacokinetics of all the formulations which are there, I think they may not be
This is not clear. Sir, so audible or not? Slight louder and slow. Okay, sir. Okay. So, kinetics of the formulations. So, we are facing a little bit problem in that, the pharmacokinetic of individual formulations of all the, it may be single drug or compound formulation, herbal or herbamental or whatever they are. So, little bit we have to go through all those guys. So that is the thing which I want to share. And Mr. Will Health also, and numbers have joined. And I'm not only congratulating, I'm very, very thankful for Vinandra sir for joining and clarifying the doubts of all the survivors. Thank you, sir. Thank you. Over to Pawan Sharma, sir. Sir, regarding pharmacodynamic or kinetic, of course, the many of the drug we don't have the literature or don't have the research updates, but it is an idea. So that the probable mode of action, what we expect from that drug, like PKPD, we can discuss, or some according to our point of view. For example, if we have some herbamineral combination or like simple triflurachune is there, so on the basis of that Amlaki, Vivitiki, Haritiki, we can convey to the student that how the trifla can be effective in a particular disease. So like that, we can. This is like these new things. So if we have included, it means that there is we have a chance to discuss on this topic, how to say that the drug is the drug particular action on a particular disease. Of course, the many of the formulation we cannot say what will be the PKPD, but something we can say, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for your views. Okay. Any who have any questions in their mind or during while teaching or any question and answer we would like to welcome. Respected Madam Yogini Patel ji, are we audible to you? Adaniya Jha sir, respected Dr. C.V. Jha sir. हाँ झा सर उपस्थित हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी। हेलो, हाँ, हेलो पवन जी, नमस्ते। हाँ योगिनी जी नमस्कार। हेलो। यस सर। जी नमस्कार। योगिनी जी को नमस्कार। कल सुना, बड़ा अच्छा आपने डिटेल में सब बात सामने रखा। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक ठाक है, सब खूब बढ़िया। हाँ सर, बिल्कुल ठीक। सर प्रणाम सर। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। सर आपको कुछ सजेशंस या कुछ बताना है तो बताइए सर। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा सब कल आप लोग रखिए। अब हम लोग तो आउटडेटेड जैसा हो रहे हैं। वास्तव में चीजें वही विनम्र सब बढ़िया। हाँ सर अच्छा लगा सुने डिटेल में। हाँ जी सर। तो वास्तव में एक पुरानी चीज है कथन कि अधीति, बोध, आचरण और प्रचार, ये 4 फेज बताए गए। पहले अध्ययन करना, उसका ज्ञान ठीक से करना, और फिर जब ज्ञान हो जाए उसका तो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद फिर उसको प्रोपोगेट करने की बात आती है। तो वास्तव में ये जो सिलेबस वाला मुद्दा है वो हमेशा परिवर्तनशील है और समय के अनुसार परिवर्तन उसमें होते रहना चाहिए, जो देखा भी जा रहा है, हो रहा है। इस दृष्टि से अब हम लोग अपने को देखते हैं, जो आज से करीब 50 साल पहले
आयुर्वेद की पढ़ाई शुरू किया था और 50 साल से भी अब अधिक होने जा रहा है। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि जिस तरह से उस समय और आज का जो समय है, तो समय के हिसाब से अगर न चले तो शायद पीछे छूट जाए, लेकिन उसमें चीजें वही हैं, नोमेनक्लेचर बदल रहा है, थोड़ी सी उसको सामने रखने की जो पद्धति है और ढंग है वो थोड़ा सा बदल रहा है, लेकिन ठीक है, समय के साथ ये सब बदलाव चाहिए। और सिलेबस सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। समय के हिसाब से जो चीजें लगे कि भाई आउटडेटेड हो रही हैं, उन चीजों को कम कर दिए, निकाल भी दिए। जो चीजें नई उसमें जुड़ने लायक लगे कि भाई कुछ और चीजें इसमें आना चाहिए, तो ऐसी चीजों को शामिल करना। तो बड़ा अच्छा लगा। कल जो योगिनी जी को सुना, आज विनम्र जी को सुना, और वो विलगे साहब को सुना। बड़ा अच्छा लगा सब डिटेल में, समय के हिसाब से जो चीजें बदलाव इस समय, बल्कि नया सिलेबस जो है वो मैं देख भी नहीं पाया हूँ सही तरह से उसको, कि किस तरह से उसको रखा गया है। लेकिन चीजें जैसी चर्चा से पता चला कि चीजें तो वही हैं सब, और उसको प्रस्तुत करने का ढंग जो है वो थोड़ा सा बदला है। तो अच्छा है ये सब, और बड़ा अच्छा मतलब डिस्कशन भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, मतलब चले आगे बढ़ें। और पवन जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम को आप आगे लेकर के चलें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। मैं योगिनी जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर योगिनी जी। सर आज तो एक दो बातें थोड़ी सी कल वाली चर्चा के आगे बतानी थी, कि जो कुछ क्षेत्रीकरण या और एक दो बातों के बारे में कल द्विवेदी सर बात कर रहे थे। तो अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को सेंसिटाइजेशन काफी है। हम उन सारी बातों को पोस्ट ग्रेजुएट में डिटेल में स्टूडेंट्स जाने इसकी कोशिश करने ही वाले हैं। और कज्जली के बारे में शायद मेरे कहने का मतलब आधा ही प्रस्तुतिकरण हुआ ऐसे मुझे लगा। अर्ध समान द्विगुणमिताद्य गंधक चूर्णात पारदकस्य, ये वाली परिभाषा तो पढ़ानी ही है, लेकिन अर्ध समान और द्विगुण या कितनी भी मात्रा में भले हम गंधक को मिलाए, अलग अलग कल्पों में अगर देखते हैं तो गंधक और पारद के प्रोपोर्शन की मात्रा अलग अलग आती है। तो जब कज्जली बनती है पारद और गंधक की या धातुवीर गंधकादेश ये इसके साथ धातुओं के साथ भी अगर कज्जली बनती है, तो जो चूर्ण खरल में मिलता है वो वास्तव में क्या है, उसमें कितना फ्री सल्फर है। तो वो फ्री सल्फर है, हम आगे जाके प्रोसेसिंग में गंधक जारणा की जब बात करेंगे तो उस हिसाब से अगर बच्चों को पढ़ने को मिले, ये बताने का उद्देश्य था। ऐसा नहीं है कि हमको परिभाषा प्रकरण में सिर्फ उसकी केमिस्ट्री और ब्लैक सल्फेट ऑफ मर्क्यूरी पढ़ाना है। तो जो एडिशनल बात बतानी है उसके पीछे की, जो कि एलो में लिखी है, उसके ऊपर कल हाईलाइट करने की कोशिश की थी। फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में जैसे बिलके सर और विनम्र जी ने बताया, अगर कोई थोड़ा सा सोच समझ के इन बातों को पढ़े तो चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में जो दशविध भेषज परीक्षा है, और अष्टांग संग्रह के अध्याय में भी जो भेषज के संबंधी बातें हैं, तो उसी क्रम से ही ये सिलेबस, मतलब उस क्रम को ध्यान में लेके हुए बनाया ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचने पे मुझे ऐसे लगा कि ये बिल्कुल वैसे पैरेलल चल रहा है। एवं गुणम एवं प्रभावम करते करते हम प्रयोग विधि में जब आते हैं तो इस प्रकार के पुरुष को इस अनुपात के साथ इस काल में देने से इस तरह का परिणाम पाया जाएगा। ये जो सारे के सारे स्टेप्स बताए हैं, तो वो फ्लो भी इसको मैच ही कर रहा है। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हम ग्रंथ से कहीं छूटे नहीं है। निर्माण में और प्रयोग विधि में जो आदर्श भेषज के गुण हैं
बहुता तत्र योग्यत्वम अनेक विध कल्पना संपत्ति शुष्कोयम द्रव्याणाम गुण उच्यते, वो भी बच्चे जाने। एकल द्रव्य चिकित्सा जैसे वनस्पति जो चूर्ण की होती है, उस तरह से एक भस्म प्रयोग विधि में रस तरंगिणी में जैसे कई प्रकार से प्रयुक्त हुए हैं, तो उसकी जो विविधता है वो भी बच्चे जाने, इसका अवसर इस प्रकार से दिया जा रहा है। और थोड़ी सी एक बात मुझे ऐड करना मैं ठीक समझती हूँ कि भले कुछ शब्द पास पास वाले हैं और पूरे डिस्क्रिप्शन में अगर करिकुलम में नहीं भी आए हैं, लेकिन पढ़ाते वक्त अगर लगता है कि ये बातें हमारी चर्चा में इन शब्दों को, इन संकल्पनाओं को, इन तथ्यों को, इस परिभाषा को या इस इंफॉर्मेशन को बच्चों को जानना जरूरी है, तो हमको बताना है। किसी ने मना नहीं किया है। जैसे कल मैंने कहा कि बाइबल है, इसमें से एक एक शब्द है, उसको फॉलो करना है, 100% फॉलो करना है, ये है ही। लेकिन करिकुलम पढ़ाते वक्त जाते जाते हम बच्चों को जो पूरक इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो देने ही वाले हैं। वो तो मैं तो समझती हूँ कि हर एक टीचर अपने हर एक क्लास का महाराजा है ना? तो उनको डिसाइड करना है कि अपनी प्रजा के हित के लिए क्या करना। तो करिकुलम को फॉलो करना ही है, लेकिन करने का हमारा जो तरीका है उसमें टीचिंग लर्निंग मेथड्स भी बताए हुए हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी है और वो हमेशा रहेगी। कोई किसी भी काल में कोई भी करिकुलम कोई भी चाहे बनाता हो, तो ये बातें भी हम लोगों को जाननी है। और आगे जाके मैं समझती हूँ अगर प्रैक्टिकल में या पेपर 1 पेपर 2 की थियरी में कहीं भी जाने अनजाने में अगर कुछ बात रही है, तो झा सर, लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, प्रजापति सर, पवन सर, आप सब रसशास्त्र के बहुत ही विद्वज्जन यहाँ पे है, टीचर्स है, तो आप जरूर हम लोगों को मार्गदर्शन कीजिए। उसका जो टेक्निकलिटीज है, शुद्धि पत्र की हो या आगे जाके करिकुलम रिफॉर्म, ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, तो अगली वाली प्रोसीजर की हो, तो उसको जरूर ध्यान में लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम रुके हैं, ये तो बहते जाने वाला ज्ञान का प्रवाह है। तो मैं समझती हूँ काफी हद तक हमारे सभी प्राध्यापक अध्यापक मित्रों को इससे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मार्गदर्शन मिला होगा। हम सब लोगों का अम, म, मिलना भी हो सकता है बार बार, और इस चर्चा के बाद भी वस्तुतः जब क्लास शुरू करेंगे, तब अगर किसी प्रकार के सुझाव की या डिस्कशन की जरूरत पड़ती है, तो वी आर अवेलेबल, वी ऑल आर अवेलेबल। हमारे एनसीआईएसएम के वेबसाइट पे भी सभी करिकुलम कमेटी के मेंबर्स ने जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, अपने विषय के साथ साथ दूसरे विषयों के भी देखे, जैसे कि द्रव्य गुण में एक्टिविटीज को, द्रव्य गुण में निदान में एक्टिविटीज को बहुत ही डिटेल से वहां पे एक्सप्लेन किया है, तो अपने उदाहरण में उसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि एक्टिविटीज में अगर रोल प्ले नहीं है, तो रोल प्ले का आइडिया हमको अच्छा लगा तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है वो उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया टीचिंग लर्निंग मेथड या एक्टिविटी का उस टॉपिक के पढ़ाने के आसानी या जरूरत ये होना चाहिए, न कि मुझे अच्छा लगा है। कई सारे वर्ड पजल्स हम बना सकते हैं, अपने भावना द्रव्य हमको याद नहीं है तो या लिस्ट, कई सारी बातें रसशास्त्र में है कि, और भेषज कल्पना में खासकर कल्पों के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो पूरा का पूरा लिस्ट हमको याद रखना है। जिन बच्चों के श्लोक याद नहीं रह सकते हैं, उनके लिए हम आसानी से ऐसे कुछ छोटे छोटे खेल बना सकते हैं। आजकल कई सारे वैज्ञानिक खेल छोटे बच्चों से लेके, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मॉडर्न मेडिसिन में ऐसे एजुकेमेंट एंटरटेनमेंट के कई सारे ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उनके लिए उसको डॉक्टर लोगों ने, टीचर्स ने बनाए हैं या आईआईटी वालों के साथ किया है, मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे कि बोन का, मसल का ओरिजिन इंसर्शन याद रखना है,
तो उन्होंने कई सारे छोटे छोटे इस तरह से बनाए हैं जो कि कई जगह पे एप्लीकेबल है। हम ऐप बना सकते हैं वनस्पतियों के लिए। फिर मैंने वो एक्टिविटी वाले में दिखाया था, ऐसे हम प्लेइंग कार्ड जैसे कार्ड्स बना के, जैसे कि सूट शेखर के लिए 5 कार्ड बने हैं, आरोग्यवर्धिनी के 5 बने हैं, और उसके साथ अगर अगर कोई गेम हम बनाते हैं तो ऐसे भी आइडिया कई सारे आपको या आपके जो टेक्नोलॉजी वाले फ्रेंड्स है उनके साथ हम डेवलप कर सकते हैं। तो लर्निंग को एंजॉयबल बनाना और अपने स्टूडेंट को जिस स्तर पे वो है वहां से उसको रुचि उत्पन्न करना, और उसके ज्ञान को बढ़ाना, और आज के ग्लोबल डिमांड के अनुसार उनको आगे ले जाना, ये जो हमारा मकसद है, उसके लिए ये कोशिश के एक मैं समझती हूँ 5-10 कदम हम चल रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की शुभकामनाएं, आप सभी का सहकार्य, मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणादायी है। और सभी के सुझाव, जहाँ कहीं भी कुछ लिमिटेशंस या कुछ एरर्स टेक्निकल हो चाहे एकेडमिक विषय के बारे में हो, तो उसके बारे में मेरी प्रार्थना है कि आप जरूर अपना योगदान दीजिए। नमस्ते जी। बहुत ही सरल शब्दों में आपने बहुत ही बड़ी बड़ी गंभीर बातों की तरफ इशारा किया, बहुत ही अच्छा लगा। आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर। नमस्कार सभी विद्वान को, नमस्कार सभी साधुवाद। जो भी प्रेजेंटेशन आज रहे बहुत अच्छे रहे, और कुछ शंकाएं थी उसका निवारण भी हुआ। फिर भी एक मेरा सबमिशन है, जो कमेटी बनेगी ऐसा प्रस्तावित तो है, किंतु होता क्या है, जो हमारा जो पिछला अनुभव है, शिक्षा समिति ग्रंथों को रिकमेंड करती है। जो आपकी कमेटी है उन्होंने जो लिस्ट बनाई है वो कोई फाइनल नहीं होती, और उस कमेटी में भी ऐसे विद्वान अगर नहीं जुड़े तो पहले अभी जो सिलेबस चल रहे हैं उसमें करीबन 48 बुक्स हैं रसशास्त्र वैशेषिक कल्पना की BAMS में, या 24 बुक जो हैं। तो वास्तव में क्या पोजीशन है, उनमें से सारे ग्रंथ सिलेबस को कवर करते भी हैं और नहीं करते हैं। तो जिनमें बहुत कम है और बहुत पुराना हो चुका, जब हम सिलेबस नया बना रहे हैं तो ग्रंथ भी नए स्वरूप में आना चाहिए सिलेबस के अनुरूप। तो अभी तो हालांकि पत्र के नाम बदले हैं और सिलेबस वापस बना है, तो इसके हिसाब से ग्रंथ लेखन में तो कुछ समय लग सकता है। फिर भी इतनी लंबी लिस्ट नहीं हो जाए कि जो टीचर हैं वो भी नहीं पढ़ पाए, उनके टेबल पे भी वो किताबें नहीं हो। थोड़ा सा इसका जरूर ध्यान रखना है, इतना ही मैं कहूंगा। क्योंकि हम लोग पढ़ते थे तब 5-7 बुक से सारा काम हो जाता था, और लास्ट में आते आते हो गया बुक्स तो ज्यादा हो गई और अंदर बुक्स में कुछ भी नहीं है सिलेबस का, फिर भी वो किताब जुड़ी हुई है। तो ये जो कमेटी है वो उस तरह से ध्यान दे करके नहीं रिकमेंड करती, और एक लिस्ट टिकी रहती है, आगे से आगे चलती रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर के कंटेंट भी देखना चाहिए। दूसरा, उन बुक्स में अगर एरर है तो एक भ्रांत धारणा शुरू हो जाएगी। जो एग्जाम्पल मैं अरिलोह का देता हूँ बार बार, कि कुलकर्णी टीका वाला रसरत्न समुच्चय जुड़ गया, तो हालांकि BMS में हमने रसरत्न समुच्चय नहीं पढ़ा था, विज्ञान बोधिनी की बात ही अलग है। तो इस तरह की स्थिति में हमको देखना चाहिए कि सब ऐसे जो एरर्स हैं बुक्स में, हम लोग सभी पढ़ते हैं तो उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए। जब वैज्ञानिक स्वरूप में हम पढ़ने पढ़ाना चाहते हैं, तो आज तो कंप्यूटर का जमाना है, सब लोग यूट्यूब से और कंप्यूटर से सर्वे करके और आपको प्रिंट करके दे देंगे। और टीचर जो है, मेरे जैसा तो कभी यूट्यूब या इसको देखा नहीं, तो होता क्या है कि जो हम शास्त्र में देखते हैं वो पूरा यूट्यूब में आता नहीं है, और बच्चे उसमें से कॉपी करके लाके आपके सामने रख देंगे। उसका भी कोई निराकरण आप कर सके तो अच्छी बात है। इतना ही कह के मैं सभी विद्वानों का धन्यवाद देता हूँ, और पवन जी की तरफ। हरिओम। आपकी आवाज बंद हो गई सर।
मैंने समाप्त कर दिया जी सर। आपकी तरफ। तो मैं अब अग्निहोत्री जी को मंच सौंपता हूँ। सेशन ओपन है। आज यही वेबिनार कर रहे हैं। अभी 15 मिनट सेशन ओपन। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा जी। और बहुत ही अच्छा लगा, कम से कम हम लोगों ने IRES के प्लेटफॉर्म में इतने अपने को जिम्मेदार मानने की कोशिश की। कम से कम जो नया सिलेबस आया है उसमें रसशास्त्र और वैशेज्य कल्पना एक विषय से शुरुआत करें, और सोमवार से लेकर हम लोग आज बृहस्पतिवार तक पहुंच गए हैं। इन दिनों में बहुत ही ब्यौरेवार सभी संभ्रांत और सभी गणमान्य लोगों ने जिन्होंने जो कि सिलेबस बनाने में अपनी सशक्त भूमिका निभा के आए हैं और उसके पक्षधर हैं, उसके हर पॉइंट को बलवत्त तरीके से स्थापित करने में सक्षम रहे हैं, उन सबको आपने आमंत्रित करके उनके विचार रखवाए। और बहुत कुछ शंकाएं, बहुत कुछ डाउट्स जो सामान्य रूप से शिक्षकों को विशेष रूप से और छात्रों को सामान्य रूप से रहेंगे ही या थे, उन पर चर्चा कराई। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने वैद्य नंबर शर्मा जी को, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के बावजूद, अस्वस्थ रहने के बावजूद भी बहुत ही हिम्मत करके पूरे जीवन के साथ में गला खराब, खांसी, बुखार होते हुए और वो सब बातें जो उनसे जुड़ी हुई थी स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया। पेपर फर्स्ट के रूप में उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया है। और वैद्य रमन जी ने पूरी बात कहने के साथ साथ ये भी बता दिया कि जो फार्मेको डायनेमिक चीजें हैं और जो फार्मेको काइनेटिज्म की बातें हैं, तो शब्दावली के अनुसार हम बच्चों को इसकी जो सत्यबोधिता है वो भी कराने में सक्षम रहे। और नाति विस्तरण के भाव से हम बहुत ज्यादा विस्तार में न जाके उस पूर्व वाले सिलेबस में वर्णित की गई वस्तुओं को केवल एक क्रमबद्ध किया गया, एक सूचीबद्ध किया गया, और कोशिश की गई है कि रिपीटिशन को हटा के अगर 5 के बजाय या 20 के बजाय हमने 5 में एज ए मॉडल एक एग्जाम्पल के तौर पर व्यवस्था बता दी, सिखा दी, बच्चों को तरीका बता दिया, चाहे पात्र निर्माण हो, बटी निर्माण हो या कूपी पक्ष रसायन हो या जो भी व्यवस्था के अंतर्गत, तो वो प्रैक्टिकल हिसाब से अच्छा लगेगा। और छात्रों ने, मैडम ने कल ही बताई थी कि छात्रों को बाद में बेड पर जाके भी, माने जो क्लिनिकल वाला एस्पेक्ट है वहां भी ये देखना जरूरी है कि काय चिकित्सक कौन कौन रस या कौन कौन सी निर्मित औषधियों का उपयोग करते हैं किस रोगाधिकार में और उस रोगी को कितना फायदा हो रहा था। देखा जाए कि रस शास्त्र विषय के विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन लेवल से ही, पीजी तो उनका एक्सक्लूसिव होता ही है, ग्रेजुएशन लेवल से ही अपने को अस्पताल से भी बांधने की बात रखी गई। तो बहुत ही अच्छे विचार विधेयक आए, लगातार गंभीरता से सुन रहे हैं। मुझे तो लगा शायद छात्रों का पार्टिसिपेशन अभी होना नहीं शुरू हुआ है, जिससे कि जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं या डिस्कशन की बात करते हैं तो उधर से कोई बात आए। केवल एक बच्चे ने परसों बोला था, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट था और चीजों के लिए, लेकिन अभी भी गुरुजी ने जो बात रखी वो भी बहुत समीचीन है कि हम अत्यधिक संख्या में, पूर्व में तो बुक्स पहले तो बहुत कम थी, फिर बहुत अधिक आ गई, अब बहुत ज्यादा आ गई, और टाइटल के नीचे सभी लोग लिखते हैं कि भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार नवीनतम, तो ये तो लिख देते हैं, लेकिन वास्तविकता कितनी है कि अंदर खोल के देखें और चर्चा करें कि कितना है। साथ साथ अगर कोई कहीं पर बाद में त्रुटि दिखाई पड़ी तो उसका इरेटा या उसकी परिशिष्ट या उसको कुछ और संशोधक एक परिशिष्ट लगाना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। तो इन विषयों पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि यह अब नवीनतम जो पाठ्यक्रम स्थापित किया जा रहा है, जब वो मैंने प्रैक्टिस में आ जाएगा, लगभग आ ही गया है, फर्स्ट में तो आ ही गया है, तो उसके अनुरूप भी पुस्तकों के नाम और उनका अपडेशन भी उतना ही जरूरी होगा, जिससे कि बच्चे केवल और केवल विकिपीडिया और गूगल के ज्ञान से ही न अपने को संपूर्ण समझे। शास्त्रगत और शास्त्रों जो चला आ रहा है परंपरा से, रसशास्त्र के इतिहास या आयुर्वेद के इतिहास से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं, जो हमारे ज्ञान के लिए मील का पत्थर है, उनकी भी अवहेलना या उपेक्षा न किया है। ये विषय बहुत ही अच्छा गुरु जी ने बताया। तो आज के वक्त में सभी अतिथि करता वक्ताओं का बहुत बहुत आभार भी करते हैं। रमन जी का करते हैं, गुरु जी का करते हैं, प्रबोध साहब का भी करते हैं, और योगी जी ने भी कल की और आगे बढ़ाया कि हमें क्षेत्रीकरण के We can invite any question from the audience. ऑडियंस सब लगभग अपने विचार दिए। जो मैंने कहा ना, डॉक्टर विलास चंदन जी हैं, डॉक्टर वंदना विरुद्धकर हैं, अपने डॉक्टर खाजी रहीमी जी हैं,
ज्योत्सना श्रेयान जी है। आप लोग अपने विचार रखना चाहें, कोई शंका है या कोई नए सिलेबस या रसायन कल्पना के लिए पिछले 5 दिनों से चर्चा में आ रहा है, उसको कोई अपनी जिज्ञासा प्रकट करना चाहे तो आपका स्वागत। हमारे प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, अभी आज के वक्ताओं को उन्होंने सुना है, लाभ लिया है, तो उनसे हमारी इच्छा है कि अगर उनके पास कोई विचार जोड़ने के लिए है तो उनका स्वागत है। हम नाम लेकर बुला पाएंगे अगर आप हैंड रेस कर सकें तो। और जो रसशास्त्र के विद्यार्थी हैं इसमें कि वो विशेष रूप से पहल करके अपनी शंका को रख सकते हैं। मैनुअल के बारे में भी चर्चा हुई और डिटेल्स हुई, प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा हुई, थियरी के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, टीचिंग नॉन टीचिंग जो हम लोग ट्यूटोरियल वगैरह कहते हैं, सारा पुनः एक बार स्थापित किया जा रहा है। तो आप लोगों के विचार आमंत्रित है। अभी इन्होंने नहीं इंटरेस्ट लेना शुरू किया है जो एक्टिवली कुछ बताएं। डॉक्टर ज्योत्सना जी जुड़े हुई है श्रेयान से, श्रेयान जी है। डॉक्टर खाजी रंडी जी हैं, डॉक्टर रमेश परवार जी हैं, डॉक्टर विलास चंदन जी हैं। आप लोग इतने जुड़े हुए हैं। और हमारे सौरभ खरे साहब भी हैं। हाँ, सोमानी साहब बिना वॉइस से जुड़े हुए, माइक नहीं है, ये तो रामपाल सोमानी साहब से विचार लेते हैं। आदरणीय सोमानी जी, आप तो सुन पा रहे हैं आवाज, तो आपके विचारों का आमंत्रण है। नहीं जुड़े, ऑडियो से नहीं जुड़े। पर अभी ये लोग कोई अपनी इसमें राइट नाउ कुछ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम समय को अपना ले लेते हैं अगली वेबिनार के क्रम में। उसकी आप लिंक तैयार कर दीजिए। अगर वो आपकी तक जुड़े रहते हैं तो रक्षा संबंधी की बात आएगी तब उनका विचार ले लेंगे। जी सर, अभी लोग समय आपके विचार देने। डॉक्टर विलास चंदन जी, सर कोई सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी अपने वचन, अपने विचार, प्रस्ताव नहीं देने की स्थिति में है। अभी जब धीरे धीरे से पढ़ाना शुरू करेंगे सर तो एक एक वो पता चलेगा सब लोगों को। हाँ, मुझे यही लग रहा है। अभी क्लासेस शुरू हुए हैं ना सर, तो 1 महीना हो गया शुरू होके, तो यही लग रहा है जैसे से आगे जाएंगे तो बिल्कुल। अभी उन्होंने इसको गहराई से लिया नहीं है और सच बात है, अभी इसके अपडेशन के लिए हमारे बहुत लोगों ने अभी सिलेबस बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं है सर। पूरा पढ़ेंगे तो उनको क्लैरिफिकेशन भी होगा और जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। हाँ, आप वही करें, 118 पेज का है, तो अगर 10-10 पेज भी पढ़ेंगे तब भी उनको हफ्ता भर का समय लग ही जाएगा। और नहीं उतना क्यों है, लेकिन क्लियर है सर, सिलेबस इज वेरी वेरी क्लियर। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, क्या एक्टिविटी कराना है, वो तो बढ़िया किया है। वो तो एनसीएसएम को हम सब ये कर दिया। वो बीएस प्रसाद सर ने उस दिन बोला कि हमने रात को 2 बजे तक, सुबह तक 4 बजे तक काम किया है, तो बहुत ही बढ़िया काम किया है सर सिलेबस बनाने में। वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकते। वीडियो की क्वालिटी में शायद कुछ फर्क है, कुछ वो नहीं उतना अच्छा समझ में आ रहा है शायद, जो वीडियोस बना के दिए गए। सर वो सब एक्टिविटीज वगैरह जो बोला है सर, वो अभी सब जो एनसीआईएसएम मतलब अभी नैक में क्राइटेरिया में जो आता है ना, जो भी बीएस प्रसाद सर ने जो फ्रेम किया है, पहले वो केएलई में जब थे सर ने वहां इंप्लीमेंट किया उसको। आज द सिलेबस इज फ्रेम मतलब नैक के हिसाब से जो टीचिंग आवर्स, नॉन लेक्चर आवर्स और जैसे फ्लिप क्लास वगैरह आता है, टाइप्स ऑफ क्लासेस, तो बच्चों को हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाने से अच्छा है कि क्लासरूम में ही हम उनको एक्टिविटीज कराना है। इट इज कॉल्ड एज नॉन लेक्चर आवर्स। जैसे भी रसशाला है, जैसे पहला पॉइंट शुरू होता है रसशाला, तो बच्चों को क्या बोल रहा है कि आप सभी लोग मिलकर एक रसशाला कैसे बनाओगे। जैसे बच्चे खुद इन्वॉल्व होके जब वो ये करेंगे तो नॉलेज जो है वो ज्यादा गेन होता है। और म्यूचुअल डिस्कशंस हो या क्विज हो, क्रॉसवर्ड हो, तो सभी एक्टिविटी में दिया है सर। वो तो बहुत बढ़िया है कि आप सभी रस द्रव्य रख दो, तो बच्चों को बोल दो कि आप इसमें महारस को अलग करो, उपरस को अलग करो,
तो बच्चे को प्रैक्टिकली जब करेंगे एज ए गेम भी हो जाएगा, वो खेलते खेलते ही सीख जाएंगे बच्चे, जैसे प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में होता है ना। तो वैसा किया है सर, वो तो बहुत बढ़िया सिलेबस उन्होंने किया है, वो तो नहीं, कोई डिनाई नहीं कर ये सकता। अच्छी बात है, हर बच्चा करेगा। मतलब पहले थे कि कुछ बच्चे कुछ रसाला से संबंधित श्लोकों का चार्ट बना के लगा दिया, कुछ शंकर पार्वती जी को तरीके से बना के हाँ लगाया। सर, अच्छा, कोई करते, कुछ लोग गजपुट के लिए व्यवस्था करते थे, मैंने एंड द रियल फैक्ट सर, मैं रियल फैक्ट बोलना चाहता हूँ, जो हमने पढ़ा, हमने 20 साल तक अभी पढ़ाया है वो अलग हो गया, हमें फिर अभी पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी को ध्यान रखना। उसी 75% पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हाईली साइंटिफिक है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली चंडोला सर जी बोलते थे, अगर आपका प्रीवियस क्लास और आज का क्लास सेम रहा तो यू आर नॉट ए टीचर, गुड टीचर। सो एवरी क्लास शुड बी सेम, पिछले साल जो पढ़ा है वही आप पढ़ाओगे तो यू आर नॉट ए टीचर। चंडोला सर जी हमेशा कहते थे जब क्लास दे रहे थे वो। तो इसलिए सर ये तो प्रक्रिया है, तो पढ़ना पड़ेगा, वी हैव टू। अभी एक हमारा भी शायद 15-20 साल सर्विस है, तो फिर से एक बार पढ़ना है, थीसिस घुमाना है, क्योंकि थीसिस में रहता है सभी फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, ऑनलाइन अवेलेबल है सभी थीसिस। हमारे बहुत सी वेबसाइट किया है, एनसीएसएम वालों ने, सीसीआरएस वालों ने किया है, सभी के थीसिस अपलोड है, चाहे जामनगर के हो या हमारे राजगंज से के हो, एमएचएस के हो। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वो तो है, वो तो जैसे समय चेंज होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, वो वही है सर, और कुछ नहीं, पढ़ना पड़ेगा, वो मैं कहता हूँ। एवरीथिंग एवरीवन हैज टू रीड एंड दे हैव टू कन्वर्ट टू द टीचर्स स्टूडेंट्स। शायद आप किसी संदेश को लेके बच्चे जो आते जा रहे हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है सर, गूगल में डाल देते हैं, वो सर्च में डाल देते हैं पॉइंट, तो हमसे ज्यादा उनको पता चल जाता है, क्योंकि अभी गूगल और विकिपीडिया में सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, लेटेस्ट तो आ ही जाता हूँ। तो ठीक है, हम प्रोफेसर पवन शर्मा जी को वापस करते हैं अगली वेबिनार की तैयारी के लिए। 10 बज गया है। ओवर टू पवन शर्मा जी और नेक्स्ट वेबिनार विच इज बेस्ड ऑन मीटिंग को लास्ट रख रहे हैं सर, क्योंकि राष्ट्रार्थ का फिर नहीं होगा, तो एनी क्वेश्चन एंड आंसर आज यही लास्ट है। कोई बोलने का तैयारी नहीं है सर, टीचर लोग ही सब बोल रहे हैं। पवर सर वही बोल रहा हूँ ना मैं सर, जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो तकलीफ पता है, जब सिलेबस पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभी बहुत लोगों ने सिलेबस खोला ही नहीं है, देखा ही नहीं है, पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए आई थिंक उनके अंदर क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो फिर एक आगे रखेंगे सेशन, जब शुरू हो जाएगा, डेट टर्म खत्म होगा तो देखेंगे व्हाट आर द डिफिकल्टीज और टीचर्स आर फेसिंग, सो देन वी कैन अगेन कॉल द कमिटी मेंबर्स एंड वी आर डिस्कसिंग। सब लोग तो ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, एवरीवन विल बी देयर अवेलेबल देयर ऑन आवर बच्चे। हम तो रोज तो हमारा चला ही रहता है, हम तो रुकने वाले नहीं है, आप तो रुकने वाले नहीं हो, तो वी कैन डिस्कस इन फ्यूचर आल्सो सर। सो विल स्टार्ट द सेकंड सेशन सर। मैं समझता हूँ, हेलो विनीत जी। जी सर। मेरे विचार में पहले सिलेबस को सामने रख करके एक टीचर्स का कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन होना चाहिए। जी जी। जितने उसमें टॉपिक हैं उसको लोग कम से कम आपस में अच्छी तरह से समझ लें। भले बनाया हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक इस तरह से आ गया सामने कि टीचर को भी पता नहीं चलता कि भाई इसमें हम किन किन चीजों को शामिल करें, कितना शामिल करें। तो जैसे एक अलग अलग जो भी इसके क्या कहते हैं विभाग बनाए गए हैं, सब कुछ इस तरह का टीचर से रिओरिएंटेशन जैसा होता है ना, इस तरह का कुछ हो जिससे पहले टीचर बिल्कुल क्लियर हो जाए उसके बारे में, तो शायद आगे जब भी उनके सामने वो सिलेबस आएगा पढ़ाने में उनको सरलता होगी, सुविधा होगी। वास्तव में सब्जेक्ट जो है वो अगली पीढ़ी को, यानी विद्यार्थी, टीचर से विद्यार्थियों में कम्युनिकेट होना, और उस सब्जेक्ट को विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ ले, व्यवहार में उतारने की स्थिति में वो पहुंच जाए। तो इस तरह की स्थिति, और अगर टीचर करके उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंट बना देता है सामने, तो ये सबसे बड़ी अच्छी मानी जाएगी बात। और होना भी यही चाहिए कि हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं विद्यार्थी उसमें पूरी तरह से उसको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली पूरी तरह से वो समझ लिया है, और स्वयं डेमोन्स्ट्रेट करके भी हमको बताने में सक्षम हो गया है, ऐसा। तो इस तरह का एक कॉन्फिडेंस विद्यार्थियों में पैदा करना। और इसके पहले वही, जैसे मैं सिलेबस को नहीं देखा हूँ, जो नया सिलेबस है,
तो अब जब नहीं देखे हैं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन एक मान करके कि भाई अल्टीमेटली विषय तो वही है, और विषय को हम नए ढंग से, नई क्या कहते हैं, जो कुछ भी कुछ आजकल टर्म्स हैं ये सब, न्यूट्रास्यूटिकल और क्या फाइटोकेमिकल, इस तरह के, तो ये सब चीजें जो हैं वो वही है कि टीचर पहले निश्चित रूप से इसको अच्छी तरह समझ ले और आगे उसे शायद पढ़ाने में सरलता होगी। तो मेरा ये इसमें एक विचार शामिल करने का वो था। ये सर आपका विचार बहुत अच्छा है, और आपको हम याद दिलाएं जिस दिन हम लोगों ने शुरुआत की थी, पहले शायद वर्ल्ड टीचर्स डे या आगे दिन, जब NCISM के सारे अथॉरिटीज भी आए थे, चेयरमैन साहब वगैरह और सारे सब्जेक्ट कमेटी के चेयरपर्सन और उनसे रिलेटेड टीचर्स, तो वहां ये बात ही निकल के आई थी कि नए सिलेबस के दृष्टिकोण से मास्टर्स ट्रेनर्स बनाए जाएंगे। सभी भारत के पूरे सभी आयुर्वेदिक कॉलेजेस के टीचर्स, हर सब्जेक्ट के टीचर के बुला पाना संभव नहीं है, इसलिए सिलेक्टिव संस्थाओं से टीचर्स को बुला के, जो सीनियर टीचर्स हैं उनको दिल्ली में या कहीं भी ट्रेनिंग देके उनको मास्टर टीचर्स बना देंगे। फिर वो अपने अपने प्रदेश में जाके अपने लेवल पर, स्टेट लेवल पर उन्हीं सब्जेक्ट टीचर्स को नए सिलेबस के हिसाब से गाइडलाइंस देंगे कैसे पढ़ाना है, क्या परिवर्तन किया गया सिलेबस में। तो इस तरीके से वो हर कॉलेज, हर आयुर्वेदिक कॉलेज स्तर पर ये इंस्ट्रक्शंस और ये नए प्रकाश में सिलेबस को समझाने का कार्य पूर्ण होगा। TOT की तरह हो जाएगा सर जी। खास करके जो लोग इस सिलेबस बनाने में जो लोग शामिल थे, इनमें से जो सारे सीनियर लोग जितने भी होंगे, उन लोगों को खास करके मैं शामिल करना, जो सामने टीचर को थोड़ा सा जहाँ कहीं भी कि भाई इस सब्जेक्ट को कितना विस्तार देना है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल करना है इस टॉपिक में, तो ये कम से कम टीचर ओरिएंटेशन के माध्यम से ये एक होना चाहिए, और हमें लगता है कि शायद इससे ज्यादा एक स्पष्ट हो जाएगा कि विषय को कैसे क्या आगे लेके चलना। जी सर, आपने सही कहा है, इसीलिए सिलेबस कमेटी जो बनाई गई थी उसमें चेयरपर्सन उनके हेड में आप देखिए सीनियर प्रोफेसर, सीनियर फैकल्टी और नीचे तक लाए गए थे, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है सिलेबस के निर्माण में। इसलिए हर स्तर पर जो 3 टियर जो सिस्टम है उसी को लेके चले थे, और उसी क्रम में ही सभी आयुर्वेदिक कॉलेज के लेवल पर सिलेक्टिवली बुलाया जाएगा, जिससे कि मास्टर ट्रेनर्स पर ये काम हो सके। अगर मान ली किसी प्रोफेसर छुट्टी पर है या असिस्टेंट प्रोफेसर छुट्टी पर है, तो हमारा एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर भी उस जिम्मेदारी को अपने उसी स्तर से निभा सके जैसा कि सिलेबस का मंतव्य है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, थोड़ा समय लगेगा और सब्जेक्ट वाइज ही हम लोग इसीलिए चल भी रहे हैं कि जो इतने शॉर्ट कमिंग्स है वो भी सब्जेक्ट टीचर्स कंसर्न जो सिलेबस निर्माण में रहे हैं सहायक, वो हाथ के हाथ क्लियर करते जाएंगे। तो ये फेजिक मैनर में शायद इम्प्लीमेंट हो पाएगा एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से, और इसके माने प्रतिफल अच्छा ही निकलेगा, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। सर वैसे एक प्रस्ताव और है कि ये जो सिलेबस है इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा है ना, वो एक जैसी होनी चाहिए, आइदर इंग्लिश और आइदर हिंदी, बाइलिंगुअल हो, क्योंकि भारत सरकार है और इसमें पहले तो संस्कृत भी चलता था। तो संस्कृत के लिए तो मैं नहीं कहता हूँ, अब संस्कृत तो पॉलिसी का मामला है, किंतु फिर भी हिंदी में उसको होना है। और नहीं तो क्या है कि अलग अलग टर्म का अलग अलग रहेगा, जैसे एक भरड़ वाला शब्द तो मैंने बोला था आपको, वैसे पूरा सिलेबस देखेंगे तो कुछ मिलेगा। और एक जैसा होना चाहिए, फार्मोकाइनेटिक, डायनेमिक, ये सारा है। फिर इसकी कोई मॉडर्न की बुक डाल दी, जो हम लोग जब थे तब भी बेंटले की फार्मास्यूटिक्स और जेंडरसन की फार्मास्यूटिक्स और ये सब, जिसका आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं। तो आजकल तो फिर कैप्सूल वगैरह ले रहे हैं, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट बुक भी होना चाहिए, इतना सा। और लैंग्वेज एक जैसी हो, आइदर इंग्लिश, आइदर हिंदी और या बाइलिंगुअल, इतना सा मेरा प्रस्ताव है। कमेटी माने नहीं माने वो काउंसिल का मामला है। हाँ, तो मतलब अब आप लोग मनीषी है, मूर्धन्य है, तो और फर्स्ट लाइनर है, तो ये तो सजेशन तो इसलिए कि हम चीजों को और प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सके, इसलिए ये राय है। हमने बल्कि देखा है BMS के मुस्लिम लड़कियां भी संस्कृत के श्लोक लिखते हैं, आराम से रटते भी हैं, शायद समझते भी होंगे आंसर में। और हमें से कोई भी न तो कुछ ही लोग होंगे जो उर्दू भाषा जानते होंगे या उर्दू के कोई
कोटेशन डालते हैं, कभी कभी हिंदी तक में तो एक बार निबंध में कुछ थोड़ा बहुत जानते भी थे, अब तो कुछ नहीं। तुमने देखा कि यूनानी के बच्चे तो लिख लेते हैं उर्दू, और बीएमएस वाले संस्कृत लिख लेते हैं मुस्लिम बच्चे। तो जब भाषा की बात आपने रखी, तो इसमें भी थोड़ी सी सार्वभौमिकता और बनेगी तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि मेडिसिनल साइंस का ज्ञान जो आयु लेके चलते हैं विभिन्न भाषाओं के द्वारा भी उनके शास्त्रगत तो उसका उल्लेख और वर्णन तो मिलता ही, बल्कि शास्त्र स्वयं मिलते हैं। तो मैंने प्रदेश व्यापिनी या देश व्यापिनी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। सर आई वांट टू शेयर समथिंग सर, अग्निहोत्री सर, अगर आप 2 मिनट टाइम देंगे। हाँ, हो गया सर 95 में बीएमएस एडमिशन लिया मैंने फर्स्ट ईयर में। कर्नाटक में जो पढ़ने का मोड था, इट वॉज इन इंग्लिश। तो उस वक्त रक्षा की सिर्फ 2 ही किताब आती थी, एक झा गुरु जी की और एक सिद्धार्थ मिश्रा सर की, 2 ही किताब। अभी भी मेरे टेबल पर वही किताब है सर जो मैंने बीएमएस में खरीदा था, क्योंकि दोज वर द ओनली 2 बुक्स। यहाँ झा गुरु जी भी हैं, द्विवेदी गुरु जी भी हैं, और हमारे प्रजापति सर भी है, वो भी हमारे गुरु ही हैं। गुरु के सभी गुरु नाम सभी लोग हैं यहाँ। किताबों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा। अभी भी मेरे टेबल पे आई रेफर चंद्रभूषण झा सर बुक, क्योंकि वो जो मैंने यूजी में पढ़ा था और पीजी में भी वही पढ़े थे। उसके बाद ही सब जो इंग्लिश में छपे जो भी हो, वो सब उसी के ट्रांसलेशन करके, सर का ट्रांसलेशन करके सब लोगों ने किया है, वो बात तो अलग है। लेकिन अभी भी वो जो किताबें सर ने लिखी है, वो जो भी पॉइंट एनसीआर सर ने फ्रेम किया, वो रेफरेंस बुक है सर, उसी में से मिलता है। लेकिन ये आगे पीछे हुआ है, बस उतना ही, और कुछ नहीं है। जैसे सर ने जैसे लिखा इतिहास, ऐसे जो पुराना सिलेबस था उसके हिसाब से अष्टवर्ग, जैसे वर्गों के हिसाब से मार्सो प्रसारण ऐसे लिखते गए, वो पुराना सिलेबस था। नया सिलेबस भी उसी में मिलेगा पॉइंट, ऐसा नहीं कि। लेकिन जो अभी का सिलेबस के फॉर्मेट में है, अभी आगे कुछ लोग लिखेंगे किताबें तो आगे आएंगी, लेकिन अभी ढूंढ के यहाँ से वहां से आपको हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा, वो तो बात अलग है। लेकिन सर की जो किताबें हैं, झा सर की और सिद्धार्थ मिश्रा सर की, वही किताबों के अंदर जो हम हिंदी में भी पढ़ के जो हम जो निकालते हैं, कुछ लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन में मीनिंग ही बदल दिया है। ऐसे भी बहुत सी किताबें हुई है सर। तो इसलिए ओरिजिनल ग्रंथ पे हमारे पास आई हैं, और जो सर किताबें ये सब रेफरेंशियल बुक करके हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को जितना अच्छा हो सके उतना पढ़ाने की कोशिश करेंगे सर। जी सर, बिल्कुल सही आइडिया है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि साउथ से लेके केरल से लेके सब लोग अपनी भाषा भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। लेकिन हम नॉर्थ इंडिया वाले लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तो जान सकते हैं, भारत के और प्रदेशों की भाषा जो हिंदी से इतर है जानते ही नहीं है, फॉलो करना मुश्किल हो जाता। तो आप लोगों को ज्यादा बड़ा धन्यवाद है कि आप लोग सार्वभौमिक रूप से विषय पकड़ते हैं, और बच्चे अब चूंकि नेशनल कंपटीशन वाली जो मेरिट में आते हैं, पीजी में भी और स्टेट में यूजी से भी, तो ये भाषा की विस्तारीकरण ज्ञान के तौर पे भी होना उतना ही आवश्यक। रही बात पुस्तक की ऑथेंटिसिटी की, तो इसमें कोई शक नहीं। हमारे थबलियाल साहब हो गए और पुराने लोग थे, अनंतराम शर्मा जी वगैरह हो गए, ये कहाँ के पीजी थे? कोई पीजी का दूर दूर तक हिसाब किताब नहीं था, लेकिन अथॉरिटी थे जो कह देते, जो बोल देते, जो उन्होंने पुस्तक लिख दी। चलते चलते करीब 90 साल की एज पर आके अनंतराम शर्मा जी ने सुश्रुत की जो इंग्लिश में जो पूरी कमेंट्री डाली है, तो ये उनकी अपनी विद्वता का प्रदर्शन। इसलिए ऑथेंटिक बुक से ही रिकमेंड की जानी चाहिए सिलेबस में, और उन्हीं से टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों को रेफर करें पढ़ने के लिए। मेडिसिन के लिए तो बना बनाया खीर और हलवा तो कोई भी खा सकता है। ग्रंथ में जाएंगे, आप देखिए चक्रपाण की ओरिजिनल टीका वाली चरक संहिता मिलती ही नहीं है। चौखम्बा बातें हम वही लिख देते हैं यंत्रस्थ है या नहीं है, तो वो चीजें अनमोल है। इसलिए ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, और गुरु जी ने द्विवेदी सर ने भी बात उठाई कि वो पुस्तकें बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए और उनका अपडेशन भी होना चाहिए। अब टिकट डील जितना कर सकता है सहायता करे। अब सभी लोग इतने माने नेट सर्वी हो गए हैं और कंप्यूटर को हैंडल करना जानते हैं, नेट को हैंडल करना जानते हैं, तो कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मोर जितने जर्नल्स, जितने पीयर ग्रुप की जर्नल्स निकलते हैं, छपते हैं, उनका जो इवेल्युएशन होता है, उसकी स्कैनिंग होती है, वो जो आते हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन ही आते हैं। इसलिए लड़कों को आजकल रिसर्च स्कॉलर्स को विशेष रूप से नेट से जुड़ा होना और नेट की बात को ही ऑथेंटिक मानते हैं, तो पुस्तकों की तरफ ध्यान उनका थोड़ा कम रहता है, खरीदते भी नहीं है पुस्तकों की तरफ। जी ध्यान ही नहीं है, वहीं है स्टफ नहीं मिलता है। सर द्विवेदी सर कुछ कहना चाहते हैं? द्विवेदी सर कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मेरा तो भार्गी जी से ये निवेदन है कि हम लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं या मौलिक ग्रंथ पढ़ते हैं, उनका हिंदी अनुवाद में भी एरर है, और फिर उससे अंग्रेजी होती है तो उस अंग्रेजी अनुवाद में भी एरर है।
तो बेटर है कि साहब वो अंग्रेजी की बुक्स पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, और मूल संस्कृत वाले हैं उनको पढ़ने पढ़ाने का अभ्यास कम से कम टीचर्स रखें। स्टूडेंट्स को तो आप अपने लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए, किंतु फिर भी पोलाइटली कहूंगा कि अवध बिहारी अग्निहोत्री जी का एक भेषज कल्पना विज्ञान जो हमने 50 साल पहले पढ़ा, कोई रिवाइज एडिशन वगैरह कुछ भी नहीं, किंतु जितनी ऑथेंटिसिटी उस बुक में है वैसी बाद में उस लेवल की भेषज कल्पना की बुक नहीं आई। तो वो हिंदी में है, उस लेवल पे अंग्रेजी की बुक, कोई बुक मुझे ऐसी देखने को नहीं मिली, क्योंकि वहां एरर होते हैं कि मूल श्लोक में जो भाव है उसको हिंदी अनुवाद करने वाले ने कमजोर कर दिया, और उसके बाद में हिंदी से जब अंग्रेजी हुई तो वहां और भी कमजोर हो गया। तो इस तरह से हमको ये देखना है कि साहब रत्नप्रभा टीका चक्रदत्त की वैशज्य कल्पना के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, जैसे सांग्रह संहिता मध्यम खंड की संस्कृत कमेंट्री वाला पार्ट, या सांग्रह संहिता में जो संस्कृत कमेंट्री है। तो थोड़ा सा हम इस बात को भी कम से कम टीचर्स ध्यान में रखें कि सब जो बुक सिलेबस में है उसको नहीं पढ़ के ओरिजिनल संस्कृत बुक और उसकी कमेंट्री पढ़ने का प्रयास करें। बृहत्रयी लघुत्रयी ये तो कॉमन सी बात है, हर जगह सिलेबस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब मौलिक सिद्धांत वाले पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़े पढ़ा में। इतना सा मेरा सबमिशन है, बाकी तो सभी विद्वान होते हैं और जो भी सिलेबस है वो सभी अध्यापक पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट्स तो सभी पास होके निकलते हैं। जो बुद्धि विशेषाद अग्निवेश की तरह होगा उसी को सभी वापिस पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर वो बेड़ाद्या किम न पठ्यन्ते तस्मात् ग्राह्यम सुभाषितम, ये एक पॉलिसी है। तो उस तरीके से आप इसको विचार करें। इतना ही मैं कहूंगा भारती जी से। धन्यवाद। बहुत 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 सही था आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और पवन शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गहनतम विचार दिए और छात्र हित में दिए, शिक्षक हित में दिए। और पवन शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ रात्रि। आज सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार सभी कमेटी मेंबर्स का, बेलगे जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि भाई। शुभ रात्रि।